नमस्कार दोस्तों, अगर आवाज आ रही है तो बताइए। क्या मेरी आवाज आ रही है? कोई कमेंट कर दो भाई, आवाज आ रही है क्या? तो हम आज अपना नेहरू चाचा के ब्लंडर का अगला एपिसोड शुरू करते हैं। नेहरू चाचा ने क्या क्या खुराफातें की हैं वो हमने पिछले 8 एपिसोड में कवर कर लिया है। अब अगले वाले एपिसोड को हम लोग शुरू करते हैं। अभी तक आप लोगों ने देखा होगा, जिन लोगों ने ध्यान से देखा होगा उन लोगों ने पाया होगा कि नेहरू साहब ने राइट फ्रॉम द डे ही एंटर्ड इनटू इंडिया आफ्टर हिज एजुकेशन, जब से वो यहाँ पर पढ़ाई करके इंग्लैंड से वापस आए थे और कांग्रेस ज्वाइन की थी, तब से वो अपनी ही जिद चलाते रहे। यहाँ तक कि जब 1935 इंडियन गवर्नमेंट एक्ट के हिसाब से हमारे यहाँ पर सरकार बनी, तो उस समय के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, जो संपूर्णानंद साहब थे, उनके ऊपर प्रेशर मारा कि इनकी बहन विजय लक्ष्मी पंडित को मंत्रिमंडल में लिया जाए। जब देश आजादी के कगार पर था तो इन्होंने 1946 में कांग्रेस की अध्यक्षता ले ली, जिसे मैं आज की डेट में क्रूड लैंग्वेज में बेईमानी से ही बोलूंगा। और महात्मा गांधी, जो कांग्रेस से दूर हो चुके थे उस समय तक, उन्हें कोई लेना देना नहीं था, फिर भी उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें 15 में से 12 प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी के वोट मिले थे, उनको एक किनारे पर रख करके और नेहरू जी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया था, क्योंकि उन्हें यह मालूम था कि जो कांग्रेस का अध्यक्ष 46 में बनेगा, वही 47 में जब देश आजाद होगा तो देश का प्रधानमंत्री बनेगा। जो नेहरू जी चाहते थे वही हुआ, वो प्रधानमंत्री बन गए।
प्रधानमंत्री बनने के बाद जब देश का विभाजन हुआ, उस विभाजन के दौरान नेहरू जी ने जो गंदा खेल खेला, वो सबको मालूम है। जम्मू कश्मीर में कबायलियों के रूप में पाकिस्तान की सेना ने अटैक किया। उस अटैक को इन्होंने होने दिया, और यहां तक कि जब कबायली लोग श्रीनगर की तरफ बढ़ रहे थे, सरदार पटेल और दूसरे लोगों के कहने पर भी इन लोगों ने सेना नहीं भेजी, और जब सेना भेजी तो बहुत देर कर दी थी, और बाद में जम्मू कश्मीर के मामले को लेकर के संयुक्त राष्ट्र संघ में चले गए। नतीजा क्या हुआ? जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा हमारे हाथ से निकल गया। इन्होंने सरदार पटेल को खुली छूट नहीं दी, फिर भी सरदार पटेल ने अपने बल पर देश के प्रिंसली स्टेट्स जो 500 से ऊपर थे उनको कब्जे में लिया, और जूनागढ़ और हैदराबाद को लिबरेट करवाया। नेहरू जी ने गोवा को इंडिपेंडेंट करवाने में भी काफी देर की। नेहरू जी ने लिंग्विस्टिक आधार पर देश के प्रदेशों का विभाजन किया, और उसमें भी कुछ गड़बड़ कर दी। आंध्र प्रदेश को मद्रास के साथ में जोड़ दिया। बाद में जब आंध्रा में आंदोलन चला तो 1953-54 के आसपास में आंध्रा को अलग किया गया। मतलब नेहरू प्रॉब्लम क्रिएटर ही थे, उन्होंने कभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश नहीं की। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि करप्शन के मामले में उनका जो एटीट्यूड था वो बहुत लैकलस्टर था। कोई भी व्यक्ति अगर उनके पास में करप्शन का मामला लेके जाता था तो उसके ऊपर वो ध्यान नहीं दिया करते थे। उनके खुद के मिनिस्टर कृष्णा मेनन साहब, जब चाइना का लड़ाई हुआ था तो उसमें जीप मंगाई थी, लेकिन जीप तब आई जब चाइना जब उसकी जरूरत नहीं थी, और वो जीप भी किसी कंडीशंस में नहीं थी। इसी तरीके से प्रकाश सिंह कैरों के ऊपर, पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर थे, उनके ऊपर जब करप्शन के चार्जेस लगे तो उनको भी वो निकालने को तैयार नहीं थे। खैर, हम लोगों ने काफी दूर तक इस मामले को कवर किया। आज हम नेहरू साहब के ब्लंडर नंबर 9 पे हैं, जिसको आपके सामने मैं पढ़ना शुरू करता हूं। उसमें सबसे पहला उनका जो ब्लंडर है उसके बारे में थोड़ा सा मैं पहले आपको बता देता हूं कि वो है क्या ब्लंडर। उसके बाद में फिर हम नेक्स्ट ब्लंडर पे जाएंगे, फिर तीसरे ब्लंडर पे जाएंगे। आज हम लोग ब्लंडर नंबर 79 को डील करते हैं। तो मैं आपके सामने एक स्लाइड शेयर करता हूं। उस स्लाइड में जो हमने तैयार किया हुआ है पूरा अपना प्रेजेंटेशन, उसको
बताते हैं। स्लाइड नहीं मिल रही भाई, रुको।
नहीं। मेरा क्रोम गड़बड़ कर रहा है भाई, क्या करूं मैं।
तो ब्लंडर नंबर 79 इनका है, बड़े मुश्किल से मिला मेरे को, ये बहुत गड़बड़ हो रहा है क्रोम में। नेग्लेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एजुकेशन. Neglect of education, especially at the primary and secondary level during the Nehruvian era, sealed India's fate as a prosperous emerging nation and a genuine enlightened democracy. नेहरू जी ने प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया था. जापान, साउथ कोरिया और सिंगापुर ने अपने को प्रॉस्परस बनाने के लिए एजुकेशन के ऊपर ध्यान दिया. नेहरू only knew one formula for development: socialism and public sector, which took India to dogs. Considering how backward the home constituencies of the Nehru Gandhis have been, despite the fact that they have been representing them for decades, universal literacy and an informed public were the two factors Nehru dynasty could not have survived. So it seemed that let widespread illiteracy and grossly inadequate educational infrastructure. The education under Nehru became elitist. There were irregular compartmentalization into the HMTs, Hindu medium type, and EMT, English medium type, with English medium type concerning most facilities and opportunities. There was little effort to make education universal. Politics and bureaucratic mess spread by the Nehruvian ensured peripheral role for the private sector in education, thus severely limiting the already limited educational sector further. यहाँ पे हिंदू मीडियम का एक क्लास शुरू कर दिया था, एक इंग्लिश मीडियम की क्लास शुरू कर दी थी. अतनुडे लिखते हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन वेल्थ एंड लिटरेसी सजेस्ट causation of all the stupidity that the government then, thanks to the incompetence of Nehru and his branch of miserable minions, not ensuring that India becomes 100% literate within a decade, stand out as costliest. अतनुडे बोलते हैं, नेहरू बिल्कुल क्रिमिनली इनकम्पिटेंट थे. IIT, IIM, All India Institute of Medical Sciences, Research and Development, SNT, not thanks to this Nehru. Nehruvians flaunt establishment of Nehru. जो नेहरू के जो चमचे हैं वो लोग बोलते हैं कि नेहरू जी ने IIT बनाई, IIM बनाए. The question is whether just 5 IITs and a few IIMs were enough for a country like India, for enough for a country of India size. 5 IIT बनाए थे, IIT खड़गपुर, IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIT मद्रास एंड IIT बम्बई, और वो भी फॉरेन एड से बनाए थे. तो इतने बड़े देश के लिए क्या 5 IIT और 4-5 IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, मतलब ठीक थे, एनफ थे? और इसके अलावा और IIT नहीं खुल सकते थे और IIM नहीं खुल सकते थे. Among the person
who conceptualized CSIR and IITs even before independence, was Sir Ardeshir Dalal from the Viceroy Executive Council. The idea was carried forward by, among other, Dr. B.C. Roy, Dr. J.C. Ghosh, Dr. Sir Joginder Singh of the VEC, Viceroy Executive Council, Nalini Ranjan Sarkar, L.S. Chandrakant, and Viman Sen. Extract from an article of Sanjay Guardian Live.com. In reality, it was through the version and effort of Arkut Ramaswamy Mudaliar that the Council of Scientific and Industrial Research came into existence in 1940, and it was Dr. Syama Prasad Mukherjee who built it up. A number of laboratories were set up by Dr. Mukherjee, including the National Physical Laboratory. ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बनाई थी. National Chemical Laboratory, National Meteorological Laboratory, Fuel Research Institute, Ceramic Research Institute, Central Leather Research Institute, and the Center Electrochemical Research Institute. 1940 तक India already had the infrastructure for supporting scientific activities. India's Hindu civilization had generated many scientific ideas and scientists over thousands of years. Institutes like the Banaras Hindu University, which was founded by Pandit Madan Mohan Malviya, the Indian Institute of Sciences, the Indian Association of Cultivation of Science, which had been founded in 1876, the core of Indian Statistical Institute, and the Tata Institute of Fundamental Research, all predated Nehru time in office. But Nehru had his supporters have taken credit for the creation of these establishments. Among the public sector unit, Hindustan Aeronautics, Bangalore Wala, had been set up by Walchand Hirachand as a private business, and it supplied state-of-the-art aircraft to Britain for its war effort, but it rapidly deteriorated after the Nehru government started managing it. The founding of the Institute of Technology and All India Institute of Medical Sciences too had nothing to do with Jawaharlal Nehru. IIT had their genesis in the NM Sarkar Committee report of 1945. Nehru's indifference toward setting up a medical institute was captured in an exchange between Dr. Mukherjee and N.G. Ranga in the Constituent Assembly. When Dr. Mukherjee mentioned that a committee under the chairmanship of Dr. Arkut Lakshmanaswamy Mudaliar had been set up to establish an All India Medical Sciences, N.G. Ranga highlighted Nehru's statement opposing the All India Medical Institute in Delhi on the ground that the housing problem had to be solved first. It was this flawed vision which made Nehru indifferent to the All India Council of Technical Education recommendation to set up Management Institute. Nehru's apathy towards science and his effort for socialist pseudoscience is best illustrated by his statement of Srinivas Swararajan and other scientists. Nehru propped up his supporters and made them key people who ended up influencing the Indian Scientists Institute over the next 5 years. Soon after, there were complaints of a class of science bourgeois who were oppressive and squelched talent, resulting in an exodus of scientists leaving India, a problem that can be labeled as brain drain. Nehru also opposed acquiring missiles and the atom bomb. इंडियन लैंग्वेज के बारे में बहुत मिस किया उन्होंने. After considerable deliberation, the Constituent Assembly agreed that the official language of the Union shall be Hindi in the Devanagari script. But for 15 years from the commencement of the Constitution, that is, from 26 January 1950, English language shall continue to be used for all the official purpose of the Union. That is, till 25th January 1965, the Official Language Act of 1963 stipulated that English may be used along with Hindi in official communication. After 1965, the left is ambiguous. Was it optional? Lal Bahadur Shastri, as Prime Minister, stood by the decision to make Hindi official with effect from 20th January 1968, and all hell broke loose in the South. Ultimately, Shastri had to back out. The question is not Hindi or English. The question is why the matter was allowed to drift for 15 years under Nehru. Why a dialogue was not established among all the stakeholders, and why what would happen post 26 January 1965 not thrashed out many years in advance, allowing for a smooth transition or for maintenance of the status quo.
If indeed all were not agreeable on Hindi, then it should have been announced well in advance that the status quo would continue till as long as all were not agreeing. Nehru's drift and lack of clarity eventually led to massive agitation and violence and bad blood among people who were quite avoidable, which were quite avoidable. Sachin too should have been careful not to go along with decision taking long ago that was not acceptable to large section. If it was thought that English as a useful language, global language, then as a matter of policy, it should have been made compulsory for all from class 1 itself. Government should have pumped in money to ensure there were facilities available in all schools to teach English, apart from regional languages and Hindi. Doing so would have ensured a level playing field for all, with all children knowing English. The English language aristocracy would have been dead. However, this was not done. The Browns have managed to create an English language aristocracy after independence. How to corner good position, job, and privilege, make them conditional upon languages of English, restrict English to chosen schools and colleges, and restrict access to those institutions to only the privilege. भाई मैंने भी छठी से अंग्रेजी पढ़नी शुरू की है और 10वीं तक अंग्रेजी सिर्फ लिख लेता था जो टेक्स्ट बुक में होती थी. मुझे को बोलना नहीं आता था, लेकिन देहरादून में शुरू से कितने स्कूल ऐसे थे जो इंग्लिश मीडियम से, जहां पर नर्सरी से ही इंग्लिश पढ़ाई जाती थी. जैसे कि जहां पर इंदिरा जी पढ़ी थी, वेलहम स्कूल है, जहां पर पप्पू जी अपने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पढ़े. प्रियंका वेलहम स्कूल से पढ़ी हैं, राहुल गांधी दून स्कूल से पढ़े हैं, राजीव गांधी दून स्कूल से पढ़े हैं, संजय गांधी दून स्कूल से पढ़े थे. This is not to say that medium of instruction should have been English. It should have been in the mother tongue in the schools, and personally also English or Hindi, with no privilege attached to learning in English or Hindi, but it should have been compulsory for all to learn English and good English. That way English should have been just a foreign language everyone knew. If English became a factor in getting job like in IIT or BPO or KPO, then with all students knowing it, it would have not been given an edge to the level less deserving. Obscure English speaking elite, obscure set of Hindi diehard, and a non-visionary incompetent leadership messed up the language issue. A vast majority of people in the South knew neither English nor Hindi. So, where was the question of their preferring either? Why should Hindi diehard have tried to impose Hindi? It is a democratic nation, and a consensus should have been evolved. Until that was ensured, nothing should have been done to force any language. If a period of 15 years was found insufficient, it should have been extended well in advance of its expiry, lest there be any uncertainty. Further, why should not an ancient nation like India have its own national language known to all for easy communication without in any way ignoring the regional languages or English or affecting the job prospect? Who care what language is so chosen? What is important is that there should have been at least one common language. It should have been Hindi or Hindustani with liberal borrowing of the word from other regional languages and English. It should have been simplified Sanskrit or Tamil or Telugu or Bengali or any other or a new hybrid language with borrowing from all. In sharp contrast to India, it is unaware that ये तो मैं नहीं पढ़ता हूँ. Language Commission set up in 1955 examined the progress in Hindi to prepare English as a language. By 26 January 1965, I provided the Constitution, reiterated the constitutional obligation, made various recommendations, but left the decision to the government. A parliament committee with G.B. Pant as the chairman was appointed in 1957 to scrutinize the commission recommendation. Its unanimous decision recommendation was that Hindi should be the principal language from 1965 and English a subsidiary one, with no target date for the switch over. Pant sent the draft report of the Parliament Committee to Nehru. Here are the extract from Kuldeep Nehru's Beyond the Lines on what transpired. Actually, Nehru wanted to carry on with the language he was comfortable in, and
it is doubtful if we really care for things India or Indian languages or culture. What is noteworthy is that most of the freedom fighters, irrespective of the language region they come from, favored Hindi or Hindustani as a common link language and national language. Yet the matter was allowed to become controversial under the watch of Nehru after independence. Lokman Tilak fervently advocated Hindi as the national language, holding the same as vital component of nationalism. Gandhi had praised Tilak for his discourse on Hindi as a national language at the Calcutta Congress. In London, Veer Savarkar had proposed the resolution of Swaraj not in English but in what he called the Hindu's lingua franca, Hindi. At the Ahmedabad Congress session in December 21, Gandhi had proposed three things: Hindi as India's lingua franca, tricolor as national flag, and Khadi as the official wear of the. Back in 1925, at the Kanpur session of Congress, presided by Sarojini Naidu, Hindustani was recommended as the language for the Congress session. After December 1926 Guwahati session of the Congress, Gandhi went on another tour of the country and, among other things, expressed in his speech that he felt humiliated to speak in English and therefore wanted every Indian to learn Hindustani. He even went further and advocated adoption of Devanagari script for all the Indian languages. Once again, he found South Indian most enthusiastic in its response to him as he addressed about 2 dozen meeting in Madras city. After the Congress session in October 1934, Gandhi traversed the country and continued his crusade, urging everyone to learn simple Hindi. After independence, once when Gandhi was addressing a meeting at Birla House in Delhi, in Hindustani, a few of the audiences said they were unable to follow, to which Gandhi said, "No, now we are independent. I shall not speak English. You have to understand Rashtriya Bhasha if you wish to serve the people." According to Home Secretary B.N. Jha, the efforts to make Hindi the local language failed thanks mainly to Nehru and his colleagues. Two big opportunities were lost. One, when all chief ministers were agreed in 1961 for the Devanagari script for all the Indian languages at the recommendation of President Dr. Jagannatha Prasad, and the second, when a proposal based on parliamentary committee report was up in the cabinet meeting by the Home Minister Pant, to which Nehru had voluntarily responded. What is all this nonsense? It is not possible to have a scientific and technological terms in Hindi. Even though Pant's proposal did not cover the latter aspect, Nehru was only expressing his dislike for Hindi. No nation is worth its spirit and soul which does not have its own vehicle of cultural articulation, that its national language provide. ये है भाई. अब आप लोग समझ सकते हैं कि नेहरू साहब कितना खुराफात करते थे, क्योंकि खुद वो लंदन से पढ़े थे, उनको अंग्रेजी आती थी और वो नहीं चाहते थे कि हिंदुस्तान एक लैंग्वेज के बेसिस पर यूनिफाई हो जाए, इसलिए वो हर बात का विरोध करते रहते थे. जय भारती साहब नमस्कार. प्रदीप नमस्कार. मेरा नमस्कार दादा. नमस्कार. क्रोम बहुत गड़बड़ कर रहा था. एनीवे, जय भारती साहब कॉल पे हैं. हाँ, मैं 1 मिनट. तुम खोलो, मेरा कुछ गड़बड़ हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है. मैं देख रहा हूँ, मैं वही कर रहा हूँ. ठीक है दादा, समझ गए इंग्लिश क्यों पसंद थी. हाँ, इंग्लिश क्यों पसंद थी जवाहरलाल नेहरू को. उसकी गर्लफ्रेंड इंग्लिश थी ना, इसलिए. आई एम द लास्ट इंग्लिश मैन टू रूल इंडिया. उसको नहीं, उसको मालूम था ना कि अगर लोग अंग्रेजी बोलेंगे तो जो गोरियां हैं वो पटेंगी ना, इसलिए वो करता था. सारे जितने भी उसके जो रिश्तेदार थे, जो फ्रेंड थे, उनको सबको अंग्रेजी सिखाना चाहता था. बाकी हिंदुस्तानियों को लगता था कि ठीक है, हिंदी सीखेंगे तो किसी अंग्रेज को नहीं पटा पाएंगे ये लोग. अंग्रेज को या रसियन को नहीं पटा पाएंगे ना, इसके लिए करता था वो. एक्चुअली वो खुद फ्यूडल था. उसको मालूम था कि हम एक लीड क्लास बनाते हैं जहां पर कि अलग से लोग बाग पढ़ेंगे और बाकी हिंदुस्तान की जनता तो बेवकूफ है. इनको रीजनल लैंग्वेज पढ़ाते रहो, कोई बंगाली पढ़ेगा, कोई तमिल पढ़ेगा, कोई कुछ पढ़ेगा, और जो सिविल सर्विसेज की भाषा है, मतलब कंपटीशन की भाषा है, उसको अंग्रेजी में रखेंगे. तो जिनको अंग्रेजी आती है वही लोग उसको पढ़ करके आगे बढ़ेंगे, और इसके अलावा बाकी सब
हमारे सामने हमारे जूते साफ करते रहेंगे, हमारे पैर छूते रहेंगे। पंडित जी आप कितने पढ़े लिखे हो? उस जमाने में हमारे बाबा लोग मतलब बोलते थे ना, अरे देखो कितनी फर्राटी की अंग्रेजी बोल रहा है। क्या करें, हमारे यहाँ तो कोई स्कूल था नहीं जहां पर अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी। हम तो मार खाते थे टीचर की जब वो बोलते थे कि, मैं उनको पूछता था, भाई तुम बोलते हो कि CUT कट होता है, PUT पुट होता है, ये दोनों गलत है, क्यों बोल रहे हो? तो बोलते थे भाई जिस तरीके से पढ़ाया जाए उस तरीके से पढ़ लो, खत्म हो गया, हमारे को इतना नहीं मालूम। खैर, कहाँ पहुंचे तुम अब इसमें? एक मिनट, ये आपने कर दिया ना 80? 80 कर लिया मैंने, हाँ। हाँ 81 आ गया। एक मिनट, प्रमोटिंग उर्दू एंड पर्शियन अरेबिक स्क्रिप्ट। ठीक बहुत है, आराम था यार। मेरा तो सही बोलता हूँ, हफ्ते भर से मेरा दिमाग खराब हो रखा है कि ऐसे ऐसे लीडर को हम लोगों ने सिर पे चढ़ा के रखा था। क्या यार, और फिर पब्लिक को मजा नहीं आता, पब्लिक बोलती है पता नहीं क्या बोरिंग सब्जेक्ट लेके बैठे रहते हो आप लोग। अरे जो अपनी हिस्ट्री से नहीं सीखता वो डूब जाता है मेरे भाई, फिर से भी गुलाम बन सेम जाता है। मिस्टेक्स दोबारा 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 रिपीट करता रहेगा जब तक हिस्ट्री से सीखेगा नहीं। अभी मैं बोलता हूँ ईमानदारी से, जितने भी लोग देख रहे हैं, वैसे तो मुझे मालूम है कोई देखता नहीं है यहाँ पर, लेकिन जितने देख रहे हैं वो बता दें जितना हम लोगों ने अभी तक बताया है पिछले 8-9 एपिसोड में, कितनों को मालूम था ये सब? हमने एफर्ट्स किया, ढूंढ के निकाला है, भले ही हमारे को कोई देखता नहीं है, कोई सुनता नहीं, लेकिन ये हम अपनी ड्यूटी समझते हैं कि हम आप लोगों को बताएं कि ये क्या है। दादा जो भी इस लेवल पे पहुंचेगा ना, जब जड़ें ढूंढने की कोशिश करेगा कि हमारी प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई, क्या ऐसा कर गए हम कि आज ये प्रॉब्लम्स हैं, तो वो जड़ें वहीं जाके मिलेंगी आजादी के तुरंत बाद। अरे उसने तो क्या किया था यूपी में, तो पर्शियन में वो जो मतलब अभी भी जो कोर्ट की तहसीलदार की भाषा होती थी उसमें क्या होता था, वही तो वो उर्दू ही वाले पर्शियन वाले वर्ड यूज करते थे ना वहां, तो उर्दू पढ़ाते थे वहां पर। ये तो हिंदी की बात कर रहा है, उर्दू पढ़ाते थे, उर्दू मीडियम पढ़ते थे लोग बाग। हाँ, और फिर भी उर्दू को ये भी समझ के नहीं पढ़ा रहे थे कि इंडिया में ओरिजिनेट हुई है, इंडिया में पैदा हुई है, ये समझ के पढ़ा रहे थे कि ये एक खास वर्ग की भाषा है बस। ये नहीं मालूम कि ये पूरी लैंग्वेज ही यहीं इवॉल्व हुई है, यहीं पे पैदा हुई है। ये थर्ड चैप्टर, थर्ड पैरा से पढ़ना, नेहरू वाज इन फेवर, आप यहाँ से पढ़ना, ऊपर वाला छोड़ दो। ठीक है। Nehru was in favor of Persian Arabic script, in which Urdu is written, rather than Devanagari script in which Hindi and Sanskrit are written. It seems that anything Indian or Hindu or representing Hindu or Indian heritage, and Nehru had some problem with it, and he tried to abort it. Ram Manohar Lohia had rightly said that Nehru was against anything that would give Indians a sense of Indianness. Also, Nehru promoted that he was personally comfortable with English and Urdu, not what was good for the nation. Hindi clearly had association with nation, India, Hindu, and Sanskrit, while Urdu has been advocated by Muslim leaders. The states that become West Pakistan and East Pakistan, now Bangladesh, had no association whatever with Urdu. Their language was Punjabi, Sindhi, Bengali, etc. But the Muslim leaders from UP who migrated to Pakistan imposed Urdu on Pakistan. What business Nehru had in trying to favor Urdu and Persian Arabic script can only be understood if we account for his pseudo secular character, eagerness to appease Muslims for votes, and allergy for anything rooted in India or in Indian culture and Hinduism. ये उसकी नफरत का वो था, आलम था। इसको अगर पखाना शरीफ मिल जाता तो ये खा जाता, छोड़ता नहीं था। Neglect of Sanskrit. While the ascendancy of English language aristocracy and the Brown Sahibs work in the Indian languages, and Sanskrit suffered a setback. See the condition of Sanskrit. Unarguably the greatest and the most scientific language. It is becoming extinct,
and unless you have mastery in Sanskrit and other old languages, you can't do effective research in past Indian history, said Will Durant, American historian and philosopher. India was the motherland of our race, and Sanskrit the mother of Europe's languages. She was the mother of our philosophy, mother through mother. Though the Arabs of much of our mathematics, mother, sorry, मैं दोबारा करता हूँ इसको. India was the motherland of our race, and Sanskrit the mother of Europe's languages. She was the mother of our philosophy, mother. ये क्या कह रहे हो? संस्कृत इज अ मदर ऑफ यूरोपियन लैंग्वेज बोल रहे हो? हाँ, तो वो तो सच बोल रहा है ना. शी वॉज द मदर ऑफ आवर फिलॉसफी. अपनी फिलॉसफी की बात कर रहा है विलियम डूरन, अमेरिकन हिस्टोरियन जो है. जी दादा, मैं मदर ऑफ इसको आवर थोड़ा सा फिलॉसफी, मदर थ्रू एक द लाइन में, अरब. दादा इसको एक सब लाइन कुछ में मैं होगा. थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ. अगर आप संस्कृत लैंग्वेज से चलोगे तो आपको यहाँ से लेके पर्सिया से लेके यूरोप तक की सारी भाषाएं संस्कृत से मैच करती हुई मिल जाएंगी. फिर यहाँ से आप इस साइड को चलोगे तो चाइना, जापान वगैरह, फिलीपींस, थाईलैंड, ठीक है, बर्मा वगैरह जो ब्रह्म देश था, इस साइड भी सारी लैंग्वेजेस आपको संस्कृत से लिंक होते हुए मिल जाएंगी. लेकिन इंडिया के इस साइड यानी चाइनीज, बर्मीज, वो जो है इधर क्या नाम है आपका, वेस्ट की लैंग्वेजेस से इस साइड की लैंग्वेजेस से अलग है वो. ठीक है. अब क्या होता है, अलग कैसे हो सकती हैं? या तो संस्कृत से ही सारी इवॉल्व होती हुई उधर गई, इधर वाली भी संस्कृत से इवॉल्व हुई, लेकिन इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं. मतलब वेस्टर्न लैंग्वेजेस का चाइनीज से कोई कनेक्शन नहीं. ठीक है. अगर ये कहते हैं ईरानियन इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस थी, तो चाइनीज का भी कनेक्शन होना चाहिए था उसके साथ, लेकिन ऐसा नहीं है. इस वजह से ये आपको कंटिन्यूटी दिखेगी. अगर आप इंडिया से उधर चलोगे तो सारे लिंक आपको पता चल जाएंगे, सही लिंक हो रहे हैं. इंडिया से इस साइड जाओगे तो यहाँ के सारे लिंकेजेस, लैंग्वेजेस जो है लिंक होंगी संस्कृत के साथ, लेकिन इन दोनों की आपस में कोई लिंकेज नहीं होगी, अलग है दोनों लैंग्वेजेस. चाइनीज का यूरोपियन किसी भी लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं मिलेगा आपको. तो इसका मुझे मतलब क्या लगता है कि इन गधों को, जितने भी ये लंदन पढ़ने गए थे ना, इनको जो वहां पे पढ़ाया गया है ना कि हाँ हिंदुस्तानी गधे होते हैं, हिंदुस्तानियों को कुछ मालूम नहीं होता, ये है वो है, ये इनके मतलब पूरा पूरा इनका ब्रेन वॉश हो गया था. मतलब जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे गांधी हो, चाहे कोई भी हो, जो भी इंग्लैंड में पढ़ने गया, उसके दिमाग में ये था कि हमारा जो देश है, हमारा जो कल्चर है, वो सबसे पिछड़ा हुआ है. और वही उनके दिमाग में रहा कि अंग्रेजी सबसे अच्छी लैंग्वेज है, संस्कृत सबसे गंदी लैंग्वेज है. ये सब उनके दिमाग में रहा, तो क्यों नेहरू को वो करेंगे? और मोर ओवर मुझे तो लगता है कि अंग्रेज लोग इसको छोड़ के गए थे कि ये आदमी कुछ दिनों के बाद में हो सकता है हिंदुस्तान को फिर से, मतलब भारत को फिर से उनको बुला ले कि भाई आ जाओ तुम यहाँ पे राज करो. जी दादा, इनको मतलब ऐसा लगता था शायद थोड़े टाइम बाद हम वापस प्रॉस्पर कर जाएंगे और वापस कॉलोनाइज कर पाएंगे. जो मुझे लग रहा है, जिस तरीके से ये बिहेव कर रहे थे, जिस तरीके से एक्ट कर रहे थे, कि सेम चीजें उनको बना के रखनी थी, बल्कि फर्दर जो है सप्रेस करना था. इसीलिए आपको लिंग्विस्टिक का जो है एग्जांपल दिया मैंने, कि इंडिया से चाइना की साइड जाओ, सारी लैंग्वेजेस संस्कृत से हैं, और इंडिया से उधर यूरोप की साइड, सेंट्रल एशिया की तरफ चले जाओ, सारी लैंग्वेजेस संस्कृत से इवॉल्व्ड हैं. लेकिन वहाँ की सेंट्रल एशिया और इधर की चाइनीज लैंग्वेजेस का या बर्मीज लैंग्वेजेस का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, दोनों अलग हैं. इसका मतलब सेंटर पॉइंट इंडिया रहा है, संस्कृत रही है, तभी ये सारा इस तरीके से चल रहा है. थोड़ा नीचे पढ़ो, द कमेंट ऑफ गुरचरण दास पढ़ो, यहाँ ऊपर छोड़ देना. द कमेंट ऑफ गुरचरण दास आर वर्थ हाँ दादा, नोटिंग. ये वाली लाइन तो पूरी पढ़ दूं. हाँ. India was the motherland of our race, and Sanskrit the mother of Europe's languages. She was the mother of our philosophy, mother through the Arabs of much of our mathematics, mother through the Buddha of the ideas embodied in Christianity, mother through the village community of self-governance and democracy. Mother India is in many ways the mother of us all. अब ये कह रहा है डेमोक्रेसी से लेके जितनी भी चीजें आप देख रहे हो, सारे आइडियाज जो है
इसी में से निकल रहा है, यही उसकी मतलब माँ है, ये कह रहा है। मतलब लगभग दुनिया भर का सारा क्रेडिट सिर्फ इंडिया को दे रहा है वो। और कहाँ से पढ़ना दादा? गुरचरण दास जहाँ लिखा है ना थोड़ा नीचे। अच्छा, ये गुरचरण दास से नीचे तो वही वही जो सेंटेंस लिखा है ना गुरचरण दास वाला ऊपर वाला, ठीक है, हाँ सेंटेंस क्या है? द ठीक है। द द कमेंट्स, कमेंट्स ऑफ गुरचरण दास, हाँ, द कमेंट्स ऑफ गुरचरण दास आर वर्थ नथिंग. An नोटिंग। Indian who seriously wants to study the classics of Sanskrit or ancient regional languages will have to go abroad. This is extraordinary in a country with dozens of Sanskrit departments in all major Indian universities. The ugly truth is that the quality of teaching in these institutions is so poor that not a single graduate is able to think seriously about the past and critically examine ancient texts. Where is India's soft power when there are fewer and fewer Indians capable of interrogating the text of Kalidasa or the edicts of Ashoka? To be worthy of being Indian does not mean to stop speaking in English. It means to be able to have an organic connection with our many rich linguistic pasts. What separates man from beast is memory, and if we lose historical memory, then we surrender it to those who will abuse it. The adverse fallout of the above is that gross distor- uh, distortionists, distortionalists of the Hindu cultural and religious heritage like Wendy Doniger of the University of Chicago and Sheldon Pollock of the Columbia University have become respected global authorities on Sanskrit literature, and ancient Indian heritage. What is more, some rich Indian businessmen have financed them liberally to bring out series based on Indian classics rather than financing competent Indians. Their interpretations are biased and distorted. It is only lately that people like Rajiv Malhotra and other Indians have begun exposing them. Books by Rajiv Malhotra like Breaking India, Being Different, The Battle for Sanskrit are worth reading. Please check Amazon. ये 3 किताबें तो 1 मिनट मैं इसको पहले नोट कर लूँ मैं। दूसरा भारती साहब वो तो बोलते रहते हैं। दादा, अगर आपको चाहिए तो ये मैं फाइनेंस कर रहा हूँ। मैं नोट कर रहा हूँ ना इनको। हाँ, आगे चलते हैं। संस्कृत, द मोस्ट साइंटिफिक अभी लैंग्वेज तक तुमने सूटेड पढ़ी टू नहीं है? जी अभी तक तुमने पढ़ी नहीं है बुक्स? पढ़ लेना भाई। दादा, टाइम ही कहाँ मिलता है जिंदगी उठने के बाद। जिंदगी अगर जिंदगी में ये नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा भाई, पढ़ लेना इनको। जी दादा, मैं देखता हूँ अगर इसकी ऑडियो बुक्स भी हैं क्या? वो तुम तुम्हारे पास वो है क्या अपना ये कौन सा है वो अमेजन ना? किंडल किंडल अरे अमेजन का जो है ना वो क्या है वो अमेजन का, अमेजन में जाओगे कहाँ से तुम अपना कहाँ से मंगाते हो? ऑर्डर मैं तो ऑर्डर वो देते हो ना ऑनलाइन, कहाँ से देते हो? दादा, मैं अमेजन से ऑर्डर नहीं देते हो। देता। मैं तो पीडीएफ कहीं ना कहीं से अरेंज कर ही लेता हूँ। तो अमेजन में जाओगे ना, अमेजन का जो एप्लीकेशन ऐप है वहां पर राजीव मेहरोत्रा टाइप करोगे, बुक में देखोगे तो सारी सारी बुक्स उनकी आ जाएंगी। वो गैंगेज इन स्नेक्स इन गंगेज करके भी है ना उनके, उनका सब कुछ है। रहते तो यहाँ पे है, वो शायद न्यू जर्सी में रहते हैं, लेकिन ही इज वन ऑफ द इंडियन हु इज डिवोट्स ऑल हिज एनर्जी फॉर इंडिया ओनली, ऐसा होता है। दादा, वो इंडिया के लिए डिवोट नहीं कर रहा, करने को तो वो पूरे वर्ल्ड के लिए कर रहा, लेकिन उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा बस। वो सारे पूरे वर्ल्ड को ही फायदा देगा वो, अगर उसकी बात मानी जाएगी तो। इनका लेफ्ट वालों को अगर बात चले तो उसको इंडिया में एंट्री बैन करते हैं वो लोग। वो बोलते हैं वो संघी है, वो हिंदू क्या हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में पड़ा रहता है, ऐसा बोलते हैं लोग।
मतलब संस्कृत को हिंदू से वो कर दिया ना इन लोगों ने, जोड़ दिया, इसलिए नहीं पढ़ाता ना ये। इसको भी तकलीफ होगी ना हीरो की कि अगर जो मेरे जो मुसलमान वोटर है जिनको मैंने हिंदुस्तान में रहने दिया, वो मुझे वोट कैसे देंगे अगर मैं संस्कृत पढ़ाने का वो करूंगा? तो ये भी तो होगा ना उसका कारण। ही वॉज डाइंग फॉर अपीजमेंट, लाइक एक जो तबका है जिनको मैंने पाकिस्तान जाने नहीं दिया, वो मुझे वोट तो देते रहेंगे। अगर संस्कृत पढ़ाने को बोलूंगा तो उनको तो फिर वो श्लोक भी पढ़ने पड़ेंगे, फिर वो बोलेंगे अरे ये तो मोहम्मद साहब की तौहीन ही है। ये भी होगा ना, इस बात को ये दादा बोल वो, नहीं रहा है। हाँ वो जो है ये वोट बैंक पॉलिटिक्स, ये तो शुरुआत से स्टार्ट हो गई थी। इसीलिए वो हिंदुस्तानी बोल रहा है, हिंदी नहीं बोल रहा है, हिंदुस्तानी बोल रहा है। हिंदुस्तानी मतलब मिक्स ऑफ हिंदी एंड उर्दू, वो बोल रहा है वो। Sanskrit, the most scientific language suited for AI, artificial intelligence, too, and the mother of many Indian and European languages, could have been simplified and modernized, like Israel did with Hebrew, and taught in all schools. In addition to English, it would have revitalized India and helped unify it. और मतलब जो है सही बात है, अगर संस्कृत को यूज करा जाता तो, क्योंकि सारी लैंग्वेजेस संस्कृत से, इंडियन लैंग्वेज तो सारी यूरोप, बल्कि 90% से ज्यादा लैंग्वेजेस पूरे वर्ल्ड की जो है संस्कृत से ही उनका ओरिजिन है। अरे साउथ इंडियन लैंग्वेज में, तमिल में और मलयालम में और कन्नड़ में कितने वो हैं संस्कृत वर्ड हैं। दादा वो लैंग्वेज का मैंने एक जगह और कवर करा था, वो मैं उस टाइम जब कोई ऐसा केस आएगा तो मैं कवर करूंगा। ठीक है, बाकी हाँ, बेस यही है। ठीक है, अभी वो जो है एआईटी की वजह से द्रविडियन मूवमेंट हुआ, उसकी वजह से लैंग्वेज वाला वो जो है स्टार्ट हुआ, पॉसिबल हो पाया। तो ये सब चीजें मतलब स्टेज बाय स्टेज इन्होंने करी हैं। आज देख लीजिए एआईटी डिस्प्रूव हो गई, तब भी लैंग्वेज बैरियर खड़ा हुआ है। Many opine that Sanskrit even deserves to be the national language of India, a privilege country given to none. A privilege currently given to none for several unaccessible reasons. For several unaccessible reasons, it was the link language and the sole medium of not only region and rituals, but also of philosophy, metaphysics, literature, poetry, mathematics, astronomy, science, law, jurisprudence, etc. For several millennia in India, it not only has a rich vocabulary but has a built-in mechanism to generate new vocabulary based on a vast store of base words and roots. It has a national identity as its vocabulary pervades all Indian languages. No region can claim it as belonging to it alone. Hence, no region conflict in its usage. तो ये कह रहा है एक्सेप्ट कि जो मतलब, जो एक्सेप्ट दो जो अपने आप को अरब का वो समझते हैं, औलाद समझते हैं, वो नहीं बोल रहा है। ये मैं इसको ढूंढ रहा हूँ, नहीं नहीं बोल रहा है वो। इवन ये आथर भी नहीं बोल रहा है उस बारे में कि नेहरू को ये प्रॉब्लम था, वो नहीं बोल रहा है। हाँ, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो साइलेंट जा रही हैं इसमें। ये समझने वाला खुद समझेगा तो समझ में आएगा। नहीं, ये आथर भी चाहता था कि शायद इस बुक को सभी लोग पढ़ें, इसके लिए केयरफुली वो उधर से हटा रहा है, नहीं मेंशन कर रहा है उसको। रियल रीजन वाज दैट ओनली, वोट पॉलिटिक्स का चक्कर था। नेहरू को वोट कहां से मिलते हैं? वो तो जो उसके दामाद लोग थे वो तो वोट देते नहीं थे ना फिर उसको। तुम संस्कृत को बना रहे हो लैंग्वेज। और दूसरा ये कह रहा है कि कोई भी रीजन जो है अगर संस्कृत यूज करते तो किसी भी रीजन का क्लेम इसमें था ही नहीं, क्योंकि ये लिंक लैंग्वेज पूरे भारत और बल्कि बाहर तक थी। तो इसलिए किसी का इस पे सिंगल हैंडेडली क्लेम नहीं था कि ये नॉर्थ इंडिया की है या यूपी की है या जो है ये केरला की है या तमिलनाडु की है, ये ऐसा कोई क्लेम कर ही नहीं सकता था। तो ये जो है बहुत सूटेबल होती नेशनल आइडेंटिटी के लिए, और इसकी वोकैबुलरी बहुत बड़ी है, तो इसमें नए वर्ड्स निकालने का स्कोप बहुत ज़्यादा है। क्योंकि दादा अभी तक 100 बिलियन वर्ड्स यूज़ हो चुके हैं संस्कृत में। और
ये जो संस्कृत में 100 बिलियन वर्ड्स यूज हुए हैं, पता नहीं कितने ट्रिलियन और निकल सकते हैं और निकलते ही रहेंगे, क्योंकि इसका स्कोप बहुत बड़ा है। इसमें मैकेनिज्म ऐसा है कि ये नए वर्ड्स बनाता रहेगा, क्योंकि इसका वर्ड्स और जो रूट वर्ड्स हैं और रूट्स हैं, वो बहुत बड़ी हैं। तो इस वजह से इसका स्कोप बहुत बड़ा है। ट्रिलियंस ऑफ जो है वर्ड्स बन सकते हैं। अभी तक 100 बिलियन यूज हुए हैं आगे आज पढ़ो, तक। आगे पढ़ो। वो तो कहीं भी संधि एक ऐसी चीज है जो 2 वर्ड को मिला दो, 3 वर्ड को मिला दो, चलता है, कुछ भी हो जाएगा वो। नहीं दादा, ये तो हिंदी में ऐसा है ना, रूट वर्ड्स तो संस्कृत के हैं। तो जो हाँ, रूट वर्ड्स हैं, वो उसका डेटाबेस ही इतना वास्ट है कि उससे बहुत सारे वर्ड्स बन सकते हैं। रूट वर्ड ही यूज होता है ना कई सारे वर्ड बनाने में। हाँ, तो अगर रूट वर्ड्स का डेटाबेस बहुत बड़ा होगा, तो वर्ड्स बहुत सारे बन सकते हैं। सही बात। इस वजह से ये कह रहा है, क्योंकि उसमें मैकेनिज्म ऐसा है, बनाने का भी तरीका बता रखा है, सारी चीजें हैं, तो वोकैबुलरी बहुत बड़ी बन सकती है। इसीलिए माइंड के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है ये। ऑन सितंबर 11, 1949, the then law minister Dr. B.R. Ambedkar, supported by Dr. Deputy Minister of External Affairs Dr. B.V. Keskar and Mr. Naziruddin Ahmed, sponsored an amendment declaring that the official language of the union shall be Sanskrit. अब ये देखो दादा, इसमें एक मुस्लिम भी है, वो भी सपोर्ट कर रहा है, आगे क्योंकि पढ़ो ना, देखो आगे क्या हुआ। हाँ, the amendment had 13 other signatories, of whom 11 hailed from South India, including 9 from Madras. अरे दादा। और आगे क्या हुआ? इसके आगे तो काट रहा है ना, ये आथर खुद काट रहा है, आगे कुछ लिख नहीं रहा है। किसने मना किया नहीं मानना है उसको? ये तो लिख नहीं रहा ना हाँ, उसके बारे वो में कुछ। हाँ, वो इसने छुपा लिया। हाँ, ये वाला फिर खुद हमको पढ़ना पड़ेगा। कम से कम हिंट दे गया ना ये। हाँ, ये दादा डिबेट हुई होगी क्या ये? देखता हूँ अगर हो पहले इसको खत्म 1949 का करते है हैं, ना? अगर होगी तो मैं लिख के रखता हूँ। 11 हाँ, सितंबर 11 सितंबर हाँ। 1949 की रिपोर्ट एक डिबेट। मिनट दादा, मैं जरा इसमें डेट आपको, ये वाला पैरा पूरा मैं नोट मैंने मैं करके लिख रख रहा लिया, हूँ मैंने अपने। लिख लिया, मैं कागज कलम लेके बैठता हूँ भाई, आगे चलो। एक मिनट दादा, मैं छोड़ता नहीं कुछ, मैं अपने ये नोटपैड में मैंने आज के टुडेज पॉइंट्स में लिख दिया, हाँ, ताकि जब बाद में देखूंगा तो बड़े आसानी से मैं वो कर पाऊंगा इसको। ब्लंडर 83, द राइज ऑफ द पैरासिटिक लेफ्टिस्ट लिबरल क्लास। पैरासिटिक बोल रहा है, मतलब खून चूसने वाले। while many studies have document while many studies have documented the predominance of the political left in the academic world, or you can say academia, the exceptional areas where they do not have much predominance are precisely those areas where you cannot escape from facts and results: the sciences, engineering, mathematics, and athletics. By contrast, no area of academia is more dominated by the left than the humanities, where there are no facts to challenge the fantasies that abound. Leftist had the leftist head for similar fact-free zones outside of academia. Thomas Sowell. In India, you must have to get familiar with the leftist anti-American, pro-Arab, anti-Israel secularist, Hindi Hindu baiting, Muslim apologist, Nehruvian JNU type, refrain and jargon to qualify as an intellectual and a liberal. It's that easy. No serious knowledge or expertise or research work or analytical ability or originality or depth or integrity is required. The origin, spread, and entrenchment of this class has been thanks to Nehru and his dynasty. Besides, it is safe. Others won't heckle you are because these typical Indian leftists have an invisible
informal brotherhood. They support, defend, and promote one another, ensure their predominance in the academy and government bodies, and stoutly defend their turf. They are also eminent invitees on TV and public functions, seriously ventilating their hackneyed, stale ideas. These windbags have not come up with a single original idea in the last 7 decades. The leftist, socialist, liberal intellectual is actually an oxymoron and an ana, ana, anachronism and an anachronism. ये जुतिया रहा है इनको. The typical Nehruvian socialist, secular, liberal, intellectual, parasitic cabal, and that has spawned the academy, the cultural, literary, archaeological, and historical bodies, and sarkari establishments, and has infested and dominated the opinion making arms like the media. Unfortunately, represent the worst in intellectual traditions and has become a major stumbling block in progress, for it has managed to pervert sensible discourse. It is even liberal and fashionable to be anti-national, जो आजकल का फैशन है. It supports a globally discredited socialist economic worldview that has practically and amply demonstrated its poverty perpetuating, misery multiplying, anti-poor, anti-prosperity, anti-anything good characteristics, anti-anything good characteristics. Its secularism does not rise above religion, but is restricted to being anti-Hindu, but is restricted to being anti-Hindu and pro-Muslim, and being unmoved and unconcerned by blatantly illegal proselytization. Its liberalism is being pro-animal rights while being pro-beef and non-veg, being anti-American while yearning for green card or assignments in the US, being a rationalist by slamming all Hindu customs and beliefs while keeping mum on regressive practices of Islam or Christianity, being pro-Arab and anti-Israel, being anti-Sanskrit while being pro-German or pro-foreign languages and so on. यही तो चल रहा ना दादा साउथ में कि हिंदी नहीं चाहिए, इंग्लिश दे दो, ठीक है, और हमारी मदर टंग हिंदी नहीं चाहिए, हिंदी को अलग रखो. हिंदी होगा तो इम्पोजिशन होगा, इंग्लिश होगा तो वो जो है चॉइस होगी. जितने एलीट हैं उनको पढ़ना चाहिए इसके बारे में. क्या बोल रहे हो, कितना गाली दे रहे हो. ये तो अभी किताब बेचने के लिए खुल के गाली भी नहीं दे रहा है, नहीं तो बहुत भयानक तरीके से ये दे सकता था, जिसके जैसी इसकी वो लग रही है राइटिंग्स, है ना दादा. They oppose renaming Aurangzeb Road, but never raise a voice against naming of hundreds of government schemes and institutions after the Nehru Gandhis. They talk of common man and justice and rage about inequality, but find nothing uncommon or no injustice or no inequality in the unjust, shameless continuance of the dynasty. They shut against intolerance, but are themselves the prime examples of intolerance. For alternative view, despite it being far superior to theirs, it has been said that true intellectuals tend to have an easy relationship with the status quo. However, this de- deracinated Indian intellectual class has become uncomfortable with the change in the status quo. They feel comfortable only when cocooned in their good.
Old Nehruvian, secular, socialistic. I scratch your back, you scratch mine. Mutually beneficial, incestuous, incestuous, quid pro, quid pro quo, milieu. At home with the Nehru Gandhi dynasty. Blunder 84. Mental and cultural slavery. Nehru, the last Englishman to rule India. Mental We and man, cultural slavery. Wow. the Nehru कहता है, the last Englishman to rule India. We managed to break the shackles of economic and political slavery, but mental and cultural slavery that we have willingly adopted. That Gandhi had done much to counter that slavishness is well known. But what is strange is that little was done in the post-independence period by Gandhi's chosen protege Nehru to carry forward Gandhi's legacy. If anything, the mental and cultural slavery increased. In no small measure, in no small measures to the example set by Nehru himself and the politics that flourished under him. Gandhi had once told Jawahar wants Englishmen to go, but Angreziyat to stay. I want Angreziyat to go, but Englishmen to remain as a friend. Knowing this, why Gandhi chose Nehru as a prime minister is a mystery. Gandhi used to say that even though Nehru used to fight with him on many issues, ultimately he used to agree with him. Gandhi. Little little did Gandhi know about little did Gandhi know that it was not because Nehru agreed with him, but because Nehru knew that to continue to differ from Gandhi might cost him his position, like it happened with Netaji Subhas and his goal of becoming the prime minister. Gandhi had also said that after he would be no more, Nehru would speak his language. If Gandhi had watched from heaven, he would have known that Nehru has buried Gandhism along with his death, Gandhi's death. Yani. Incidentally, this last thing was told by a Nehru loyalist, Rafi Ahmad Kidwai himself. Jawahar has performed the last rites not only of Gandhi but of Gandhism as well. मतलब साथ वाले भी जूते मार रहे थे, पीछे नहीं रह रहे थे, मौका जहां मिल रहा था वो मार देते थे. Nehru was reported to have said about himself. लेकिन फायदा क्या उसका, ये भी तो है ना. जूता मारने से हाँ क्या होता है, रिजाइन कर दो ना, या उसको मतलब मजबूर कर दो कि वो बाहर जाए. तो वो नहीं करते थे ना ये लोग. दादा, एकता नहीं थी ना, जैसे अभी हिंदुओं में नहीं है. ठीक है ना, रिजाइन नहीं कर रहे हैं और ना अपोज ही कर रहे हैं. Nehru was reported to have said about himself, Galbraith. ये किसी का नाम है क्या दादा? Galbraith. I am the last Englishman to rule India. Nehru said this privately in his conversation with the American ambassador J.K. Galbraith. The remark is also mentioned in Fareed Zakaria's book, The Post-American World. We had such a great Swadeshi nationalist, Nehru has also remarked. In my likes and dislikes, I was perhaps more an Englishman than Indian. I looked upon the world from an Englishman's standpoint. It was one thing to feel so, but quite another to be self-complimentary or arrogant about it, unless you were not a proud, patriotic, rooted Indian. In fact, when Nehru had returned to Allahabad from London after his studies, the then British governor of UP had hoped that George, as Jawaharlal was known in the British Indian circles then would be Lord Macaulay's dream of a brown Englishman
come true. Nehru seemed to fit well with what Lord Thomas Babington Macaulay, the Pope of British English education in India, had conceptualized in his Minute on Education on 2nd February 1835. We must uh, we must at present do our best to form a class who may be interpreted interpreters interpreters between us and the millions whom we govern, a class of persons, Indian in blood and color, but English in taste, in opinions, in morals, and in intellect. Effectively, what Macaulay advocated was creation of a new caste, an elite class of Anglophiles, Anglophiles, the Brown Sahibs, and that's what the Nehrus were. Motilal Nehru had once banned the use of any language other than English in his house, creating thereby difficulties for those in his large household who didn't know English. Jawaharlal Nehru was the epitome of a brown sahib with a white interior and aber Macaulite and Uber Macaulite कुछ भी कह लो उसको. In his book Jawaharlal Nehru, a biography, Shankar Ghosh wrote, Malcolm Muggeridge, after seeing Nehru shortly before his death, characterized him as a man of echoes and mimicry, the last viceroy rather than the first leader of a liberated India, and regretted that Nehru was much too British in his approach to have been able to bring about significant or radical changes in India. Remarked Niraj Chaudhary in his book Autobiography of an Unknown Indian, Part 2. Nehru was completely out of touch with the Indian life, even of his time, except with the life of the self segregating anglicized set of Upper India who lived in the so called civil lines. Chaudhary, had, Chaudhary said that Nehru had little understanding of the actual India life or culture or of Hinduism, and was a snob, contempt, contemptuous of those who spoke English with an Indian accent. Wrote Brigadier B.N. Sharma. Nehru's personality acquired a superficial Indianness and a love for English mores without developing a deep insight into the core of either culture or philosophy. N.B. Khare, the president of All India Hindu Mahasabha, had said in 1950 that Jawaharlal Nehru was English by education, Muslim by culture, and Hindu by an accident. और बर्थ का कहना चाह रहा हूँ. वही 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 Moments बराबर है, सही सही पहचाना उसने. ये लाइन अच्छा डिस्क्राइब करती है. लिब्रांडो लिखना भूल गए, नहीं तो कंप्लीट हो जाता. Monuments to slavishness, colonial statues, names, right in the heart of New Delhi in India Gate, प्रदीप, staring. एक बात हाँ बताऊं, मुझे जी लगता दादा. है अपने अपने यहाँ पर इस टीम में वो चमचे हैं ना, जो जो मतलब कांग्रेसी चमचे हैं ना, वो ज्यादा है लगता है. वो नहीं आते यहाँ पर, उनको लगता है अरे बाप रे, या तो हमको गाली दे रहा है. अब क्योंकि दादा हमारे हमको यहाँ पर कौन. ज्यादातर जो सब्सक्राइबर है वो वही है ना, जो एक्स मुस्लिम चैनल को देखते थे. तो अरे उनके दादा उनके हमको दिमाग में कहीं हम कांग्रेसीपन घुसा हुआ है. नेहरू साहब उनके लिए देवता हैं, इसलिए नहीं आते इधर. ठीक है दादा, ना आने दो ना. हमें कौन सा उनसे वो चाहिए, क्या नाम है, कंट्रीब्यूशन चाहिए जो हमारे को दर्द होगा. हमें थोड़ी किताब बेचनी जो इसकी तरह हम दूसरा, उनको पूरी ये बात लगता नहीं होगा बोलेंगे. कि अंग्रेजी में बोल रहा है. जितने भी ये एक्स मुस्लिम चैनल को फॉलो करते हैं, उनको किधर अंग्रेजी आती है? घंटा उनको अंग्रेजी आती है.
वो सोचते हैं अंग्रेजी में पढ़ते रहते हैं, कहाँ आके देखें इनको हम लोग, उनको समझ में नहीं आता होगा। अब इसको हम अगर ट्रांसलेशन करने जाएंगे तो मतलब ही बदल जाएगा, तो इसको तो अच्छा ये है कि ओरिजिनल फॉर्म में पढ़ो ना। दादा देखिए, ये जरूरी नहीं है कई बार हम डायरेक्ट ही बात करें। जो समझदार लोग होंगे, उनका सर्कल होगा, थोड़ी बात होगी तो वो रीजनल लैंग्वेज में भी चला जाएगा। जितने लोग समझ पा रहे हैं उनके लिए समझना ठीक है, वो समझेंगे। और क्योंकि उनके भी सर्कल्स हैं तो ये बात धीरे-धीरे जाएगी, डायरेक्टली नहीं जाएगी, डायरेक्टली हम शायद नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा उसको हिंदी में ट्रांसलेट करने में। या तो इसको बाद में कोई हिंदी में बस बोल दे, मतलब वीडियो लेके उसके ऊपर डबिंग कर दे, अगर कोई होता है ऐसा तो। इसका हिंदी में होगा फ्यूचर ट्रांसलेशन में, तो होगा इस बुक का? मैं देख लूँगा दादा। मैं देख के इसको अवेलेबल करा दूँगा कम्युनिटी में, ठीक है? अगर होता है तो मैं डाउनलोड करके कम्युनिटी में डाल दूँगा। तब तो ठीक रहेगा, जो पढ़ना चाहेगा पढ़ लेगा। मोमेंट्स ऑफ स्लेविशनेस, colonial statues names, right in the heart of New Delhi at India Gate, staring at all the passers by, including the freedom fighters, the bureaucrats, the politicians, the ministers, stood the statue of King George V for 2 decades after 1947. It was only when Belganin and ये इसका नाम सही से पढ़ने में नहीं आ रहा है, Khrushchev Khrushchev, Khrushchev Khrushchev, Khrushchev. Khrushchev visited India in late 1955 that India changed the names Kingsway to Rajpath and Queensway to Janpath in New Delhi, lest the guests feel shocked at our slavishness. मतलब इन्होंने क्या However, किया? हेलो, हाँ बुल्गानिन और क्रुश्चेव को खुश करने के लिए इन लोगों ने किंग्सवे का जो नाम है ना वो राजपथ किया, क्योंकि वो तो रशिया, वो यूएसएसआर का प्रेसिडेंट था ना क्रुश्चेव, इसीलिए। और क्वीन वे क्या क्या, किंग्स वे टू राजपथ एंड क्वींस वे टू जनपथ। अदरवाइज उस समय क्वीन वे और किंग्स वे हुआ करते थे, राजपथ और जनपथ। जी दादा, ये लेस द गुलामी गेस्ट शॉक्ड एट आवर स्लेवरीनेस, मतलब जो गेस्ट होंगे ना उनको फिर मतलब दे विल बी शॉक्ड कि अरे बाप रे, अभी भी तुम गुलाम हो क्या? हाँ, गुलामी वाली मानसिकता के बारे में बता रहा है, slavishness. However, Khrushchev did not fail to notice the statue of King George V opposite India Gate when driving down Rajpath and wondered why the relic still stood. But it was only in 1968 that the statue was removed, and that too upon public outcry. मतलब अपने आप कुछ नहीं करना चाहते थे, पब्लिक धक्का दे तब करते थे। Colonial clubs. Bengal Club in Kolkata did not allow Indians till a decade after independence. Braj Candy Club in Mumbai continued with its sign "Dog and Indians not allowed." Well after independence, British openly insulted and humiliated Indians by having such signage in various clubs, train bodies, train bogies, and other places. Yet, you have many shameless, ignorant Indians still behaving dog-like and praising and admiring the British rule. Khushwant Singh wrote that he was turned away from Madras Club because he was wearing sandals. In other contexts, he wrote that their group was invited to Delhi Gymkhana for a cocktail only to check whether they were properly anglicized and fitted in colonial ways. Wrote RNP Singh in Nehru, A Troubled Legacy.
Even after independence, Nehru's mental makeup continued to remain as that of the British. He showed a surprise attachment to the old standards set by colonial rulers. At informal dinners at Prime Minister's house, a liveried liveried attendant stood behind each guest. After 12 years of independence, Harold Macmillan, during his brief visit to India, had observed all the antiquity and ceremony were preserved according to the old style. The plates and china, the plates and china remained with their arms and heraldic devices. The pictures of the viceroys were on the walls. All the pomp and circumstances were unchanged. We were also the chief guests at garden party. They're also in the old style with the old viceroys their guard in their splendid uniforms. The trumpeters, the military secretary, and the ADCs, all in the full military. During the same period, the American ambassador J.K. Galbraith, 1961 to 63, after a visit to Wellington in South India, note all visit to Wellington in South India, noted in his diary, the Indian Army officers favor all British Army manners from dress, salute, drill, and whiskey to moustache. The Queen's pictures hangs prominently in the officers' mess. Western Moors. Wrote Durga Das, several ministers who used to squat on the floor and eat off brass plates or plantain leaves in their homes were now were now trying to ape Western ways. They contended that Nehru considered only westernized people modern. Kushwant Singh mentions about an Indian High Commissioner in Canada who was a member of ICS and uncle of his wife in his autobiography, Truth, Love, and a Little Malice. Truth, Love, and a Little Malice. For the Malik's culture, being meant being well dressed, knowing European table manners, and having a familiarity with exotic drinks like old fashioned Manhattan. Like the ICS, the Brown Sahibs, and peoples like the Nehru's army was yet another bastion aff- uh, afflicted by the disease. Wrote Kuldeep Nair, reporting on the position of the front during India-China War. I met young army officers sitting in another corner of the lounge. They were bitter and openly spoke of how every requirement of senior officers soldiers had to carry commodes were met. At the last picked post, even while the firing was going on, a captain admitted, "We are no longer fighters. We think of clubs or restaurants even in the trenches. We have gone too soft. We are no good." Motilal Motilal Jawaharlal tribe versus Rao tribe. There was already a tribe of Brown Sahibs prior to independence, whose stellar representatives were Motilal Jawaharlal Nehru. But with the departure of the whites, the tribe entrenched itself, slavishly imitating the West and adopting their mores was forward-looking and being modern and advanced without being jingoistic. One must adopt good things, even if foreign. But there is a big difference between being rational, scientific, liberal, forward-looking, yet self-respecting, and being slavish, shows off, and imitators. You can't start rubbing your history, language, religion, culture, music, eating habits, medical practices, and so on to appear modern.
To imitate, it is a cheap way of appearing forward looking. You notice a sharp contrast between the Motilal Jawaharlal tribe and Narasimha Rao tribe. Motilal Jawaharlal tribe, that is the Motilal Nehru dynasty, the imitators like Motilal Nehru, his son, the ICS tribe, and the like went to ridiculous extent to be more English than the Englishmen. They regarded knowing English and being Anglici- Anglicis- anglicized as enough qualities for gaining positions and privileges, and they bent over backwards to please the English and Westerners. They were affiliated by what can be termed as a coolie complex, which resulted in their internationalizing and inferiority complex, self loathing, and a contempt for things Indian, particularly Hindu religion, culture, and traditions, and made them ape the West. On the other hand, the Rao tribe, that is the current young generation of information technologists, finance professionals, management consultants, and the like, who have come up thanks to reversal of Nehru dynasty's economic policies by Narasimha Rao, are confident professionals meeting all English, American, European, Australian, Canadian, Japanese, Chinese, Singaporeans on equal terms, never considering it necessary to know Queen's English, SMS English, sufficient, working English being sufficient, or to imitate their modes and habits merely to look like them. In fact, if this genes generation get to know of the Motilal Jawaharlal tribe and what they did, they would be aghast. अब आगे चल देता हूँ। दादा शायद ड्रॉप हो गए हैं। मैं पढ़ने में बिजी था। Plunder 85. Distorted self-serving secularism and minoritism. Secularism is disassociation of religion from the state. It is the principle of the separation of government institutions and functionaries mandated to represent the state from religious institutions, religious authorities, and religious functionaries. With the dominance of Christianity in the West, the results were disastrous. The Dark Ages and violent punishments, repressions, tortures, and inquisitions that continued during the subsequent period. Christianity claimed to be the only truth, the and the only true religion, and was even opposed to science if it digressed from the Christian beliefs. Notable is illustrative examples of victims or those who afraid of the church tended to hide or delay publication of their findings, being the greats like Nicholas Copernicus, Galileo Galilei, Charles Darwin. It was gradually realized that the necessary drivers of the civilized, harmonious, progressive, and prosperous state were multi-religious societies, multiculturalism, free thinking, and propagation of knowledge, and unhindered scientific pursuits. But all these became victims of Christian, Christian totalitarianism and exclusivism. This led to the advocation of the concept of secularism. However, Hindu civilization had built in Indian Hindu civilization had built-in secularism, and it did not just readily accept. It freely promoted multi-ethnicity, multi-religious, multiculturalism, and its dharmic traditions actively promoted and encouraged pursuits of knowledge and science, quite unlike and in sharp contrast to the other later two Abrahamic faiths. In contrast to the other later two Abrahamic faiths. No wonder Indian mathematics, astronomy, medicine, etc. were centuries ahead of the West. Yet copycat and Anglophile Nehru, who neither had a deep understanding of the Western civilization evolution nor of India, grabbed on secularism without realizing it was irrelevant for India, as it was built into the Indian Hindu ethos. On the occasion of the roping of Ramakrishna
Ramakrishna Mission Institute in Calcutta in 1961. Together with the inauguration there of a conference on spiritual life, Nehru burst out in his speech. I always avoided using word spiritual. I have always avoided using the word spirituality because of the existence of much bogus spirituality. India is a hungry nation. To talk of spirituality to hungry men does not mean anything. It is no good running away from the daily problems of life in the name of spirituality. I am out of the place in this gathering. I am supposed to open this building in and inaugurate the conference. I do so. What arrogance and ignorance was the institute or the conference advocating spirituality to cover up for hunger? Can't endeavoring for a better material life, including, of course, removal of hunger, and search for an enlightened spiritual life go together. And search for an enlightened spiritual life go together. If not in Nehru and Nehru dynasty India of poverty perpetuating socialism, where there would always have been poverty and hunger. There could never have been any place for spirituality. Author of Discovery of India failed to discover that despite different physical features, language, food habits, costumes, and so on, if there was something that bound India together for centuries from Kashmir to Kanyakumari and from Dhaka to Dibrugarh, it was Hinduism and its associated religions like Jainism, Buddhism, and Sikhism that arose from its soil, and that Hinduism and Indian cultural and civilizational traditions had built in secularism and multiculturalism, as they always accepted other religions and minorities, wrote David Frawley in his foreword to Sandeep Balakrishna's book, 70 Years of Secularism, unpopular essays of the unofficial political religions, unpopular essay on the unofficial political religions of India. India's secularism founded by Nehru, in fact, has been con- colonialism, colonialism, that's colonialism, not in disguise, but in a bold, new, aggressive, and intolerant form, propelled not by foreign rule, but by the rule of foreign mindsets, by the Indians themselves. That something is against secularism became a way to condemn anything Hindu as effectively as missionaries and mullahs had used such terms as polytheists, idolater, heathen, or kafir. Secularism gained a new sanctity to override any spiritual basis to India's culture. Anti secular forces were in turn deemed fascist, revealing the leftist rhetoric behind the charge. There was an effort to make anything Hindu as a fascist, just as the Chinese communists regarded Tibetan Buddhism as fascist. The book documents the cultural genocide of the Nehruvian Marxist alliance wrought on India over the last 70 years and its great civilization for thousand, many thousands of years, under the name of secularism and socialism. While India did not politically become communist, it was a communist sympathizing culture and was under communist intellectual rule. Even long after the fall of the Soviet Union in 1991, the shadow has yet to be entirely lifted, lifting it as the intellectual necessity of India to progress, whether in maternally or culturally. Jinnah's call for observance of Direct Action Day on 16 August 1946, India led to Calcutta carnage or the Great Calcutta Killings. It was the worst communal carnage committed by the Muslim League that left 5,000 to 10,000 dead,
15,000 injured, and about 1 lakh homeless. H.S. Sohrawardy, who was heading the Muslim League dominated government in Bengal, and whom then come to be known as the Butcher of Calcutta. Rather than controlling the situation further, instigated the Muslim Gundas. Nehru, as the vice president of the executive council that became the interim government on 2nd September 1946, with Nehru as the PM, did little to bring relief to the victims of the specious plea of provincial anatomy, provincial autonomy, provincial autonomy. Nehru was then PM, did little to bring relief to the victims of the specious plea of the provincial autonomy. The law and order was state subject, hence the domain of Bengal provincial government. However, when there was a reaction later to the Calcutta killings in Bihar, Nehru himself rushed to Bihar, ignoring the fact of provincial autonomy, even threatening the Bihari Hindus with bombing. If Muslim kill Hindus, then ignore or make excuses or hide behind the technical grounds. But if Hindus counter react to Muslim killings, immediately get into action against the Hindus. Among many other matters where Patel and Nehru had divergent positions was the issue of Ajmer riots soon after independence. In the Ajmer communal riots, notwithstanding the undisputed mischief of the Muslims, while Sardar Patel rightly backed the Chief Secretary Shankar Prasad, Nehru intervened through his private secretary HVR Iyengar to mollycoddle violent Muslims and instructed that as many Hindus, though they were not the guilty party, as Muslims be arrested to maintain balance. Nehru allowed inundation Nehru allowed inundation of Bengal and Assam by Muslims from East Pakistan, Bangladesh now, drastically changing its demographics. It did it didn't draw upon him that it was the changed demographies that led to the creation of Pakistan, and allowing demographics to freely change in independent India may again lead to divisions. Nehru turned a blind eye to the illegal and rampant proselytization by the Christian missionaries, the net effect of which was the secessionist movements in the Northeast. A genuine secularist and a wise visionary leader would have known that ensuring Hindus, that includes Buddhists, Jains, Sikhs, etc., continued to be overwhelming majority of India was guaranteed way of ensuring permanence of genuine secularism and a bulwark against communism. The letter to Abrahamic religions, in their claims of being the only true religion, being exclusivist, proselytizing, and anti-secular, witness the many no-go zones in India where Muslims are in majority, or disallowing Hindus to vote in certain areas in Bengal where Muslims are in majority, or driving away the Kashmiri Pandits from the Muslim majority Kashmir Valley, or the unpardonable abusive language that the Muslim and Christian missionaries use against Hindu gods and traditions, wrote the veteran Congress leader D.P. Mishra. And so far as Nehru was concerned, he had apparently expected secularism to be practiced only by the Hindus. However, when it came to grabbing power, the getting votes for Nehru, his secularism was no constraint. The Congress so maneuvered that in the 1957 elections, the Bishop of Kottayam issued an appeal to the Kerala Christians to vote for the Congress.
The Congress entered into an alliance with the Muslim League in Kerala to grab power. Nehru forgot all about the Uniform Civil Code laid down in the directive principles of the state policy, which could have vastly benefited Muslim women. Nehru forgot all about the Uniform Civil Code laid down in the directive principles of the state policy, which could have vastly benefited Muslim women. Once he realized that, once he realized that thanks to mullahs, once he realized that thanks to mullahs and conservative but influential Muslim groups, it could cost his party Muslim votes. Nehru's secularism was leveraging religious minorities for vote bank politics. Unlike the minorities, Hindus did not vote as a bloc, and therefore doing injustice to the majority religion didn't affect votes. However, favoring religious minorities did yield vote dividend. Didn't affect. However, favoring religious minorities did yield vote dividend. As they voted on religious lines, Nehru was quick to grasp the convenient road to votes and power, and in the grab of secularism, acted in a way as to procure the votes of the religious minorities. Like the economic field, like in the economic field where Nehru laid the foundations of misery through his debilitating secularism. In the political and electoral field, he laid the foundations of harmful, competitive Religious minoritism. Nehru, as a head of interim government, had moved an object resolution resulting in Article 29 and 30 of the Constitution on 13 December 1946 with a view to appease Muslim League so that it does not press for partition. However, partition and Pakistan became a reality on 15th August 1947. Yet the Articles 29 and 30 of the Constitution meant to avoid partition continued to be debated after the creation of Pakistan and were finally included in the Constitution, a clear and irresponsible case of minority appeasement by Nehru. जी दादा इस पे कमेंट इतना करिए। टुच्चा था ये आदमी, बाप रे, क्या बोलेंगे, टुच्चा बोलेंगे, लुच्चा बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको। उफ। अच्छा, अभी भी वही कर रहे हैं कर्नाटक में, क्या कर रहे हैं वो लोग, बजरंग दल, ये दल, वो दल, जो बकवास कर रहा है वही कर रहा है कि जो जितने मुस्लिम वोट है वो पोलराइज हो जाएं। आज जो अभी एग्जिट पोल का रिजल्ट आया है, मतलब कांग्रेस को ज्यादा वोट मिल रहे हैं। हाँ, परसेंटेज ज्यादा है उसकी। दैट इज ओनली बिकॉज उसने जो मैनिफेस्टो में घुसेड़ दिया ना कि हाँ ठीक है, तो जितने भी वो जेडीएस को जा रहे थे और ओवैसी की पार्टी को जा रहे, सारे वोट इधर आ गए, इसके पास, कांग्रेस के पास आ गए कि अरे ये तो हमारा प्रोटेक्ट करेंगे हमारे को। उनको तो वही है ना, जो बीजेपी को हरा सके उसी पार्टी को वोट देते हैं ना वो लोग तो। जी दादा। अब ये देखो, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करते रहते हैं ना, जो जिसके बारे में बात चल रही है। अब पढ़ो इसमें आर्टिकल 44 में क्या लिखा हुआ है। गवर्नमेंट बोलती है कि लाएंगे, नहीं लाएंगे, सुप्रीम कोर्ट बोलता लेकर के आओ। जितने भी ये मुस्लिम सपोर्टेड पार्टीज है वो सारी बोलती नहीं नहीं नहीं, नुकसान हो जाएगा। पढ़ो, देखो क्या लिख रहा है। मैं पढ़ू क्या? एक मिनट दादा। मैं पानी पी लूं जरा, मैं इसीलिए एक मिनट बस मैं कर देता हूँ। फटाक दिन से 3-4 रह गए हैं, आज 2.5 घंटे से पहले निपटा दूंगा इसको। ब्लंडर 86। हाँ, जय भारती साहब अभी बिजी है कि काम कर रहे हैं? वो कॉल पे है दादा। अच्छा अच्छा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ब्लंडर 86, नेहरू एंड यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी, जिसकी अभी बात हो रही है, ये बहुत पहले का पेंडिंग है। Article 44 of the Directive Principles of State Policy (DPSP) in India sets implementation
of the Uniform Civil Code as a duty of the state. UCC is meant to replace the personal laws based on the scriptures and customs of various religious communities in India with a common law governing every citizen. These laws covered marriage, divorce, inheritance, adoption, and maintenance. The concepts of DPSP was uh, inspired by and based on the following: the Irish Constitution, the Declaration of the Rights of Man proclaimed by revolutionary France, the Declaration of Independence by the American colonies, and the United Nations Universal Declaration of Human Rights. In the spirit of the DPSP, yani Directive Principles of State Policy, while the Hindu Code Bill was passed during 19 in the spirit of DPSP, while the Hindu code bills were passed during 1950s, nothing was done to amend the Muslim personal laws despite many prominent Muslim advocating it, with mullahs and some Muslim bodies ex, uh, expected, expectedly opposing it, including Muhammad Ali Karim Changla, Justice of Bombay High Court from 1948 to 1958, who had made vehement plea in favor of UCC, wrote MC Changla. Consider the attitude of the government to the question of a uniform civil code. Although the directive principles of the state enjoins such a code, government has refused to do anything about it on the plea that the minorities will resent any attempt प्रदीप छोड़ at दो इसको, छोड़ दो, आगे बढ़ो, पूरा कहाँ छोड़ से दो। फॉर नेहरू पढ़ो, फॉर नेहरू, पावर वाज सैक्रोसैंक्ट। कहाँ से फॉर यहाँ से नेहरू, is हाँ। wrote Brigadier B.N. Sharma. His Nehru's actions, deliberate and inadver- inadvertent, inadvertent, encouraged a separate Muslim identity in the Indian polity, whose thoughts and actions were not always coterminous with the national ethos by installing a sense of insecurity in the Muslim minds and thereby encouraging a ghetto mentality and posing as their champion. He berated and denounced the so-called Hindu majority as communal, hoping to create a permanent Hindu-Muslim sexism and vote bank for the Congress. His successors perpetu- perpetuated the game. His successors perpetuated the game. To cover up for his vote bank politics, Nehru tried to take the expedient plea into the garb of being a liberal and a secular, that a Hindu majority nation like India would not like to touch the personal laws of minority unless the minority itself wants it. The question is, did mullahs represent the Muslims? Did Nehru assertion the wishes of the Muslim woman? Did Nehru ascertain the wishes of the Muslim women? If Nehru was genuinely a liberal and a secular person, he would rather have said, we would formulate UCC by involving all concerned. We would educate all Indians on the benefits of UCC. We would educate the Muslims on the reforms that have taken place in the Islamic countries. We would encourage wide ranging discussions. After that, we would ascertain the wishes of each gender in each religious community, including Muslims, through the secret ballot. it was worth it was worth nothing that in its judgment of 10 May 1995, the it is worth nothing that in its judgment of 10th May 1995, the Supreme Court of India reasserted the need of a uniform civil code, commenting the successive governments till date has been remiss in their duty of implementing their constitutional mandate.
enshrined in the directive principles, and averred that the UCC was imperative and averred that a UCC was imperative for both for both एक मिनट दोबारा करता हूँ it was दोबारा से शुरुआत से ही करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट से क्यों? it is worth वो सेंटेंस गलत हो गया. It was worth nothing that in its judgment of 10th May 1995 the Supreme Court of India reasserted the need of a union civil code, commenting that the successive governments till date had been remiss in their duty of implementing their constitutional mandate enshrined in the directive principles, and averred that UCC was imperative for both the protection of the oppressed and the promotion of national unity. Incidentally, the Goa state has UCC मालूम है क्या regardless करते हैं of लोग? सुप्रीम कोर्ट के जजेज जब गवर्नमेंट जो माइनॉरिटी में होती है ना, तब दुनिया भर के बकवास करते हैं. वैसे आज की डेट में जो ये सेम सेक्स की बात कर रहा है, इसे नहीं, इसके क्यों नहीं पड़ी हुई? ये भी डायरेक्शन दे देना कि हाँ करो, पूरी गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी है, लेकिन नहीं बोलेगा वो. Incidentally, the Goa state has UCC regardless of religion, gender, and caste. Hindu, Muslim, and Christian in Goa are all bound with the same law related to marriage, divorce, and succession. If there can be a UCC in one state in India, why not in others, especially when it would benefit women, notably when the Indian Penal Code for criminal offences is uniformly applicable to all communities. That is, in a way, there is a uniform criminal code. Why not uniform civil code? It is because for the Muslims, the Sharia is far more stringent on the criminal except cutting off both hands for theft, stoning to death for adultery, and so on compared to the IPC. Chose IPC for crimes and for civic cases chose personal laws because they favor males over females. ये हो गया इनका सिविल लॉ वाला. इस पे है क्या दादा कोई कमेंट? चाहिए इनको, मतलब सिविल कोड में इस्लामिक चाहिए, लेकिन क्रिमिनल कोड्स में इनको सेकुलर वाला लॉ चाहिए, हाथ नहीं कटवाने इनको. यही है ना दादा? मैं खटाखट खींचता चला जाता हूँ फिर. ब्लंडर 87 secularism versus Somnath temple. On Junagadh, please read blunder 31. And on Somnath and Mahmud of Ghazni, please read blunder 92 and 93. Somnath temple is on the shore of the Arabian Sea in the coastal town of Somnath and uh, Prabhaspatan, Prabhaspatan near Veraval in Junagadh district in Kathiawar in the Saurashtra region of Gujarat. It is 6 kilometers from Varaval and 80 kilometers from Junagadh. It is the most sacred of the 12 Adi Jyotirlings. The temple is said to have been first built sometime before the Common Era BCE. It was destroyed and looted 6 times by Junayd, the Arab governor of Sindh, in 725 CE, by Muhammad of Ghazni in 1024 CE, by Sultan Alauddin Khilji in 1296 CE, by Muzaffar Shah I, the Sultan of Gujarat in 1375 CE, by Mahmud Begda, the Sultan of Gujarat in 1451 CE, and by Aurangzeb in 1701 CE. But each time it was rebuilt. At the time of liberation of Junagadh from November 1947, blunder 31, Sardar Patel also visited the Somnath temple located in the Junagadh state. Then in a dilapidated
dilapidated condition and pledged to reconstruct and restore it to its original glory. Gandhi, when advised by Patel of the commitment, Gandhi, when advised by Patel of the commitment, suggested the funds of restoration must come from the public. Patel accepted the advice. The then Education Minister Maulana Azad, under whom the Archaeological Survey of India ASI came, opposed the idea of renovation and suggested that the ruins be handed over to the ASI and preserved in as is condition. Significantly, he never suggested the same for Muslim shrines and mosques being repaired by the ASI. दादा ये देखिए ये लाइन बहुत जरूरी है। ये मौलाना आजाद के हाथ में एएसआई भी थी और ये मतलब अगर मुस्लिम साइंस बन रहे होंगे, रेनोवेट हो रहे होंगे गवर्नमेंट के पैसे से तो चलेगा, लेकिन जो है एक हिंदू मंदिर नहीं रेनोवेट हो सकता उससे, वो भी पब्लिक मनी से करना है। लेकिन गवर्नमेंट सेकुलर है, मस्जिद तो बना सकती है, हज हाउस तो बना सकती है, लेकिन मंदिर पब्लिक के पैसे से भी नहीं बनने देगी। Upon the death of Sardar Patel, the task was taken forward by the cabinet minister K.M. Munshi. However, Nehru made no bones about his opposition to the project and made snide remarks, telling Munshi, "I don't like your trying to restore Somnath. It is Hindu revivalism." Cultured and learned Munshi, of course, sent an appropriate and telling reply to Nehru, which included the words, "It is my faith in the past which has given me the strength to work in the present and to look forward for our future. I cannot value freedom if it deprives us of the Bhagavad Gita or uproots our millions from the faith which they look upon our temples and thereby destroys the texture of our lives." ये वाला दोबारा पढ़ता हूँ. "It is my faith in the past which has given me the strength to work in the present and to look forward to our future. I cannot value freedom if it deprives us of the Bhagavad Gita or uproots our millions from the faith with which they look upon our temples and thereby destroys the texture of our lives." K.M. Munshi invited the president. K.M. Munshi had invited President Dr. Rajendra Prasad to attend the inaugural function of the rebuilt Somnath temple in May 1951, protesting vehemently. Nehru opposed Dr. Prasad attending the ceremony and wrote to him, "I confess that I do not like the idea of your associating yourself with a spectacular opening of the Somnath temple. This is not merely visiting a temple, which can certainly be done by you or anyone else, but rather participating in a significant function which unfortunately has a number of implications." Nehru also wrote to Rajaji on 11 March 1951 in the connection. "I wrote to him, Rajendra Prasad, while there was obviously no objection to his visiting this temple Somnath or any other temple or other places of worship normally. On this particular occasion, the inauguration of the temple would have a certain significance and certain implications. Therefore, for my part, I would have preferred if he did not associate himself in this way." Implications: anything Hindu, and it hurt Nehru's absurd, de- defective,
and self-serving sense of secularism. Of course, anything Muslim, Buddhist, or Christian never mattered for him in a similar way. Dr. Rajendra Prasad, of course, attended and replied, I would do the same thing, attend inauguration with a mosque or a church if I were invited. The other state is neither religious nor our state is neither religious nor anti-religious. Dr. Prasad explained that the significance of Somnath lay is being a symbol of national resistance against invaders. He made an excellent inaugural speech highlighting inter alia that it was the creative urge for civilizational renewal nurtured in the hearts of the people through centuries that had once again led to the Pran Pratishtha of the Somnath deity. Somnath was the symbol of economic and spiritual prosperity of ancient India, he said. The rebuilding of Somnath will not only complete the rebuilding of Somnath will not be complete till India remains the till in will not be complete till India attains the prosperity of the yesteryear. Such a grand speech, but at Nehru's instance, Dr. Rajendra Prasad's speech was blanked out by the official channels. It is significant that Nehru raised no such tantrums when it came to subsequent restoration of Sanchi or Sarnath, although the same were done through government funds. Although the same were done through government funds, while Somnath restoration was through public and not government funds. Why? They were Buddhist places. Nehru had problems with only Hindu places. लीजिए दादा, ये अगला चैप्टर आ गया. Blunder 88 would have been communal reservation, but for the timely intervention of the certain senior enlightened. ये दादा वो एक फोटो दिखा दो जरा, जिस टाइम डिमोलिश हुआ था सोमनाथ टेम्पल, जो पब्लिक मनी से भी नहीं बन सकता था. मतलब खुद भी पैसे नहीं दे रहे, पब्लिक बना रही है, तो अगले इनवाइट कर रहे, तो वहां जाना भी नहीं है. मैं इससे अभी चालू करता हूँ, एक सोमनाथ टेम्पल की वो दे रहा हूँ. ये है जब टूटा था. सब कुछ बने, बस मंदिर नहीं बने. गवर्नमेंट मंदिर से पैसे लेने को बैठी हुई है, पैसे दे भी नहीं रही है. पब्लिक मनी से भी बनेगा तो बनने नहीं देना है. ये हालत है सेकुलरिज्म की यहाँ. ठीक है, अब वापस आते हैं वहीं पे. Blunder 88 would have been communal reservation, but for the timely intervention of uh, certain senior enlightened leaders after independence, Nehru would have carried through yet another major blunder of reservations for Muslims, plunging India further into communal politics under the secular facade, as would be imply clear
from the following extracts from the autobiography, Government from Inside, of Envy Gadgil. The temperament of Nehru made simple problems complex and gave cause of anxiety, particularly in the matter of defense of the country. Liaquat Ali, Pakistan's PM, came to Delhi in March 1950, had discussions with Nehru, and one fine morning at 10 o'clock, Nehru placed before the cabinet a draft of his agreement with him, Liaquat Ali. I am not sure if Vallabhbhai Sardar Patel was consulted before the draft was agreed to. The final two paragraphs in the agreement accepted the principle of reservation for Muslims in proportion to their population in all the services and representative bodies in the constituent states of India. Similar provisions were suggested for the central governments also. Each one of us got the copy of the draft, but no one would open his mouth. I said, these two paragraphs nullify the whole philosophy of the Congress. The country had to pay the price of division as a result of its acceptance of separate electorates. You are asking it to drink the same poison again. This is betrayal, forgetful of the last 40 years of history. Nehru was displeased. Gopalasamy Iyengar said, there is a substance in Gadgil's objections and volunteered to draft the two provisions. I said, these two paragraphs must go lock, stock, and barrel, and no South Indian cleverness would do. Hearing this, Nehru replied with anger, I have agreed to this with Liaquat Ali Khan. I said, you must have told him that the agreement can be finalized only after the cabinet's approval. I cannot speak for the other cabinet members, but I am opposed to it 100%. On this, Vallabhbhai quietly suggested that the discussion should be postponed to the next day and the meeting was adjourned. Vallabhbhai called me for the discussion on return home. I told him, figuratively speaking, the marriage must not take place simply because the father wants it. The bride is not approved. You must speak plainly now, otherwise, complications will follow, and we may have to repent. We have decided on a secular government. This agreement destroys that conception. The same night I received from him, Sardar Patel, the papers regarding the revisions suggested by the Gopalasamy Iyengar in his Sardar Patel's disapproval from them. I noted on them I noted on them my agreement with him. When the cabinet met the next day, the last two paragraphs were omitted. The other ministers congratulated me, but it has to be sadly recorded that at the time of discussion on the draft, none of them opposed Nehru. Blunder 89 की तरफ आ रहे हैं हम. Not seeking reparations from the British, said Will Durant, the famous American historian and philosopher, in his book The Case for India. British rule in India is the most sordid and criminal exploitation of one nation by another in all recorded history. A purpose to show that England has year by year been bleeding India to the point of death. But I saw such things in India as made me feel that study and writings frivolous things in the presence of were frivolous things in the presence of people. One-fifth of the human race suffering poverty and oppression bitterer than any to be found elsewhere on the earth. I was horrified. I had not thought it possible that any government could allow its subjects to sink to such misery.
The civilization that was destroyed by British guns has produced saints from Buddha to Gandhi, philosophy from the Vedas to Schopenhauer, ये क्या है? Schopenhauer and Bergson, Thoreau and Kesselring, who take their lead and acknowledge their derivation from India. India says Count Kesselring has produced the foundest metaphysics that we knew of, and speaks of the absolute superiority of India over the West in philosophy. The more I read, the more I was filled with astonishment and indigenization of the apparently concise and deliberate bleeding of India by England throughout the 150 years. I began to feel that I had come upon the greatest crime of all history. The British conquest of India was the invasion and destruction of a high civilization by a trading company utterly without scruples or principles, careless of art and greedy of grain, overrunning with fire and sword, and country temporarily disordered and helpless, bribing and murdering, annexing and stealing and begging that career of illegal and legal plunder, which has gone which has now gone on ruthlessly for 173 years. He goes on at this moment, while in our secure comfort we write and read. Aurangzeb, the Puritanic Mughal emperor who misgoverned India for 50 years, when he died, the realm fell to pieces. It was a simple matter of a group of English buc- buccaneers armed with the latest European artillery and mortars to defeat the petty princes. It was the wealth of 18th century India which attracted the commercial pirates of England and France. This wealth was created by the Hindus, vast and varied industries and trade. It was no reach. It was to reach India of fabulous wealth. It was to reach India of fabulous wealth that Columbus sailed the seas. It was this wealth that the East India Company proposed to appropriate. Ammon, Ammon Burke had predicted in 1783 that the annual drain of Indian resources to England without equivalent return would eventually destroy India. In 1901, Palme, Rajni Palmdutt estimated that one half of the net revenues of India flowed annually out of the country, never to return. So great an economic drain out of the resources of the land with, would impoverish the most prosperous countries on earth. It has reduced India to a land of famines more frequent, more widespread, and more fatal than any known before in the history of India or of the world. Commented Rajiv Srinivasan. A strong case has been made by William Dugby, quoting Brooks Adams, that the Industrial Revolution circa 17, that is, in 1760, could not have happened in Britain if could not happen in Britain had not been for the loot that came in from India. It is indeed a curious coincidence. Plassey, 1757. The Flying Shuttle, 1760. The Spinning Jenny, 1764. The Power Loom, 1765. The Steam Engine, 1768.
Digby estimated in 1901 that the total amount of treasure extracted from India by the British was 1 अरब pounds है ये, a billion pounds, considering the looting from 1901 to 1947 and the effects of inflation. This is probably worth $1 trillion in today's money. Serious money indeed. Shouldn't we ask for some reparation? However, the most recent estimates are far more than the above. As per Business Today reports of 2018, renowned economist Utsa Patnaik, who has done research on physical relations between colonial India and Britain, has tried to answer a question many Indians are likely to be interested to know. How much of the money did Britishers take away from India? Patnaik, in her essay published in Columbia University Press recently, said Britain drained out over 45 trillion from India, which to date has hampered the country's ability to come out of poverty. दादा ये 45 ट्रिलियन डॉलर का मतलब है जितना अमेरिका सुपर पावर होने के बावजूद है, अमेरिका को दोनों को कंबाइन कर लोगे तब जाके ये होगा, क्योंकि उनके पास इतना पैसा हाथ में थोड़ी है. In view of the above, like many countries who had demanded apology. In view of the above, like many countries who had demanded apology and reparations from the countries who had tormented and looted them, India too should have assessed, documented, and put a financial estimate to the damages done by the British. Should have quantified the loot of 2 centuries, converted them at 1947 prices, and should then have claimed reparations from British, along with written and oral apology. Additionally, the detailed list of all the artifacts, archaeological pieces, precious stones such as Kohinoor and other items stolen from India should have been prepared and reclaimed from the British. It is worth nothing that the arts and treasures that the Nazis took away from the Western countries they attacked and annexed were called loot and term unjust, and Germany was forced to return the same to its rightful owner countries. Since the arts and treasures were from the Western countries and not the Asian or African countries, they were loot and were required to be returned. Loot from the Asian or African countries was not loot, was double standards. However, when the ex-colonies like India themselves did not demand return, the where was did not demand return, where was the question of Britain obliging with Anglophiles like Nehru in the saddle? Nothing was done in the matter. On Kohinoor, Nehru had made a weird comment. To exploit our good relations with some country to obtain free gifts from it. The convenient contention being that Kohinoor was gifted, a lie to British, of valuable articles does not seem to be desirable. On the other hand, it does seem to be desirable for foreign museums should have Indian objects of art. On the other hand, it does seem to be desirable for foreign museums should have Indian objects of art. Given such indifferent and baffling attitude, little could have been expected from Anglophile Nehru and his dynasty.
Nehru and the distortion of Indian history and heritage. Being a vital subject, the Nehruvian blunders with regard to the Indian history, heritage, and civilizations are covered under the following four main heads or blunders. Blunder 19, no defalsification of history. Nothing done to purge the Indian history from the gross of colonial distortions and write correct, honest, and defalsified history post independence. Blunder 1991, being creative with history. Rather than the above, the Indian history was further distorted by the Nehruvian Marxist historians. Blunder 1992, Nehru and negativism, negat, negat, negation, negationalism. हाँ. Nehru and negationalism. On the top of Marxist distortion of Indian history, Blunder 91, the Nehruvian Marxist historians indulge in blatant negationalism, denying the massive diluting Islamic Holocaust, denying or massively diluting Islamic Holocaust of Hindu India for about a millennium before the arrival of British. 93. Distortions of history by Nehru himself. Examples from Nehru's writings, distorting or misrepresenting portions of the Indian history or suppressing the unsavory parts. Blunder, being anti-Hindu. तो दादा आज का कंप्लीट होता है और टाइम के अंदर खत्म कर दिया आज 2 घंटे 2.5 घंटे से पहले. तो अभी चाहेंगे कि आप ही के दादा कंप्लीट कर दिया. कितने तक मैंने करा था? क्या 89 पढ़ा ना लास्ट? हाँ 89 तक करा था. हाँ. क्योंकि फिर बहुत बड़ा हो जाता. हाँ नहीं ठीक है. ये 2-2 घंटे का जो है ना, लेट जो भी लिसनर्स हैं लेट देम डाइजेस्ट. यार हमारे लिए भी काफी हो जाता है. जी दादा, अभी इतनी सारी चीजों पे आपको मतलब क्या कहना है? यार इट्स अ पेनफुल पास्ट. और जैसे मैंने पहले भी कहा यार, हमारे जो पूर्वज कह लो, उनकी भी गलती है, नहीं बताया. कम से दादा कम जो उनको खुद ही कहाँ मालूम था. ये नहीं तो नहीं हमें जो पार्टीशन भी हुआ और पार्टीशन की जो हाँ मतलब हॉरर्स कुछ थे, तो है गलती. मैं ये नहीं कह रहा कि गलती कुछ नहीं है. कम से कम जो उनके साथ हुआ पर्सनली, जो उन्होंने विटनेस किया, उतना तो बोलना था. वो कम से कम जो है ना, आने वाली जनरेशन्स को घर में कम से कम डिटेल में बताते कि वहाँ ऐसा ऐसा होता था. लेकिन अब उनकी अपनी मजबूरियां थी, किस कारण उन्होंने हमें नहीं बताया. अब वो एक डिबेट को क्या कहते हैं हिंदी में, विमर्श का विषय हो सकता है. या तो अब मैं जैसे बीबी दादा है, क्या बीबी दादा तो यूपी के हैं, तो उन्हें फर्क पड़ा नहीं पार्टीशन का या विभाजन का. जैसे अपना बाजवा साहब हैं, मैं हूँ, हम लोगों को फर्क पड़ा. तो हमको अपनी आने वाली जनरेशन को बताना चाहिए. मेरी तो कोई जनरेशन है नहीं आगे, लेकिन फिर भी जो सुन रहे हैं लोग, मुझे लगता है मेरा दायित्व है कि जो मेरा अपना अनुभव है या जो मेरी समझ है, वो कहीं ना कहीं मैं कह दूं. बाकी आगे सुनने वालों की मर्जी है. वो सुन के उसको एक कान से दूसरे कान से निकालते हैं, या सोचते हैं कि भाई आगे ऐसा भी हो सकता है, होगा, हो रहा है, और ये जरूर होगा. तो अभी भी जो दादा लोग देख लिखते हैं कि ये सब बकवास है, ये वो लोग हैं जो जिनका एजेंडा है, जो ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस के छोटे छोटे से कीले हैं. तो वो तो कहेंगे कि ये सब बकवास है, लेकिन हम जो तथ्य हैं रख रहे हैं. ठीक है पीके, हम अपना काम कर रहे हैं.
तो तेजवीर सिंह आ गया। तेजवीर लिंक मांग रहा है, दे दूं? हाँ एक मिनट। हाँ जी, आप तो दादा हमने ओपन पढ़ कर लिया दो सब। दादा, हाँ, अब हो गया। 89 तक मेरे को करना था, 89 तक कर लिया। पाकिस्तान को देखो ना, जो पार्टीशन का जो फायदा उठाना चाह रहे थे, क्या फायदा हुआ उनको? दादा मजे लेने दो उनको। अरे यार वहां पे क्या बोल रहा है वो क्या है वो पीएमएल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग का जो वो है स्पोक पर्सन बोलता है बीजेपी करवा रही है। चलो करवा रहे हैं, तुम कर लो, तुम्हें जो अरे करना तो है। एंजॉय कर लो फिर भाई, दुश्मन बोल रहे हो तो दुश्मन समझ के एंजॉय कर लो, तो एंजॉय करो। बीजेपी करवा रही है। ठीक है ना, तो कह दो एंजॉय करो भाई, दुश्मन मान ही रखा है तुमने तो एंजॉय कर लो फिर। अरे पीके, जो हसन निसार कहता है कि ये रॉ की साजिश है, अमेरिका की साजिश है, वो कहता है तुम्हारे में हिम्मत है तुम कर लो, तुम भी साजिश कर लो, तुमको किसने रोका है? तो अगर बीजेपी की साजिश है तो ठीक है, तुम पाकिस्तानियों में इतना दम है, तुम ही करवा लो, तुम भी तो भेजते हो ना अरे उग्रवादी, कह दो भाई तुम्हारे पास आर्मी है ना, हमला कर लो। कर लो। उनका लॉजिक क्या है मालूम है जय भारती साहब? जी दादा। कि आरएसएस ने पार्टीशन के टाइम में हिंदुओं को प्रॉमिस किया था कि जब तक पाकिस्तान में लास्ट हिंदू है तब तक उनकी हम रक्षा करेंगे। और मतलब वहां पर शाखाएं थी ना, मतलब अडवाणी और ये सारे के सारे जो जेठमलानी एंड ऑल जो वहां से आए थे, उससे पहले सारे सारे आरएसएस वाले आदमी थे और अपने वो आरएसएस आदमी वहां पे छोड़ करके आए हैं। तो वही आरएसएस और बीजेपी वाले जो हैं वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं आज की डेट में पीटीआई के नाम से। पीटीआई के जितने भी लोग हैं वो सब बीजेपी वाले हैं। हाँ सही बात है। नवाज शरीफ था बीजेपी वाला। हाँ हाँ सभी सभी। अरे तो पूरा पाकिस्तान बीजेपी का, तो सालों रोक काय को रहे हो? अपने मालिक की तो चीजें पूरी कर रहे हो तुम, जब पूरा पाकिस्तान ही बीजेपी वालों का है तो हमारी फिर तो सब जगह अपने है। मालिक के लिए तो काम कर रहे हो। है ना, तुम लोगों को देखा नहीं? तुम लोगों ने वहां पे उत्तर मतलब इंडिया में जो है मिठाइयां बटी हैं हमारी फौज के ऊपर, हमारी अफवाज बोलते हैं ना शायद, अफवाज, अफवाज के ऊपर अटैक हुआ तो वहां पर इंडिया में जो है मिठाइयां बांटी, आप लोगों ने खुशियां मनाई वहां पर। अरे क्यों भाई नहीं? यहाँ फाके थोड़ी पड़ रही हैं, हम तो खाएंगे पिएंगे ना। हम तो खाते पीते रहते हैं, 2 लड्डू इसके अलावा के भी खा लेंगे। हाँ, दो तुम्हारे नाम के खा लेंगे, खुश हो जाना। हाँ। उल्टा पड़ गया उनको ऐसे। दादा एंजॉय कर लेन दो उन्हें, आप उनकी एंजॉयमेंट में क्यों वो व्यवधान डाल रहे हो? एंजॉय करने दो उनको। हमें क्या फर्क पड़ता है? जिस जो देखो ऐसा है, अगर आपने बबूल बोया है तो वहां पर सरसों होने वाली है नहीं, बबूल ही होगा, बस ये बात पक्की बात है। तुमने ऐसे दादा पैदा किए। गंदम बोलो, अभी सरसों की जरूरत नहीं है, गंदम। हाँ अभी गंदम ज्यादा गंदम जरूरत तो क्या है। पता अभी चल गया। तड़का थोड़ी लगाना है, अभी रोटी सूखी मिल जाए बहुत है। पूरी पूरी दुनिया को टेररिस्ट देते हैं ना, वो तो टेररिस्ट पैदा होते हैं ना खेतों में, वहां पर जहां पर अरे टेररिस्ट उनके, जरूरत होती है वो दे दो उनको बस। ना अरे कोई खेती करता है ना कुछ करता है। गोली बम तो होंगे, वही खा ले। वो 2.5 पाव के क्या थे वो खा ले थोड़ा सा। आज मैं कहीं सुन रहा था कि ईद के टाइम में, रमजान के टाइम में वो लोग वो जो मिर्ची होती है ना, मिर्ची की चटनी को थोड़ा सा नमक वो करके और उसमें रोटियां खाया करते थे। रोटियां भी कैसे ही जहां से भी सड़ा गला गेहूं मिल गया उसको लेकर के इस तरीके से रमजान मनाया इन लोगों ने। गुस्से में वो लोग, कोई वहीं का कोई पत्रकार बोल रहा था कि जब इस तरीके से रमजान मनाएंगे तो सरकार के ऊपर तो गुस्सा निकलेगा ही। ये क्या बोल रहा है जॉर्ज ऑरवेल, क्या बोल रहा है भाई? हो एंड इफ ऑल द अदर एक्सेप्टेड द लाई which the party imposed, if all record told the same tale, then the lie passed into history and become truth. भाइयों मैं इसीलिए बोलता हूं, हम लोग ये 10 दिन से इसको चला रहे हैं, 9 दिन से चला रहे हैं, इसीलिए चाह रहे हैं just to tell you the real story behind what has happened for last 75 years in India. नेहरू जी ने पहले आजादी से पहले क्या किया था, आजादी से बाद में क्या किया और अभी तक क्या हो रहा है। हम लोग आज की डेट में गरीब क्यों हैं? हमारे साथ में साउथ कोरिया था
जापान था, ताइवान था, वो सब आगे निकल गए, हम लोग पीछे क्यों रह गए? जर्मनी वर्ल्ड वॉर में सत्यानाश हो गया था, वो आगे कैसे निकल गया? अगर हमारे यहाँ पर इस परिवार का राज नहीं होता था तो ये होता ही नहीं था. That's what it says. Who control the past ran the party slogan. Control the future. Who control the present control the past. The past, he reflected, had not merely been altered, it had been actually destroyed. Baapre. Golden word. History is not written by the hunted, losers and colonized. It is written by the hunter, winner and colonizer. It is meant to serve this purpose. Golden word, really. बहुत सही बात बोली दादा, ये बहुत सही बात बोली। सभी को नमस्कार। मतलब इट शुड बी गोल्डन वर्ड से भी कोई ज्यादा प्लेटिनम वर्ड होगा तो वो है ये। जी 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 संदीप दादा नमस्कार, जय दादा नमस्कार। नमस्कार। बुलाना उलाना जी नमस्कार जी, जी नमस्कार बाजवा जी की हालचाल जी, जी, सत श्री सत श्री अकाल जी, अकाल। नमस्कार जी, नमस्कार जी। नमस्कार आज कितने हवाई जहाज सत श्री अकाल संदीप जी। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। हाँ, पता नहीं अब तो इमरान खान ने कुछ बोला है कि उसको टीके लगा रहे हैं हल्के जहर वाले ताकि वो जल्दी तो जिंदा आराम से क्यों है? वो बोलने के लिए जिंदा हो रखा है। अगर कोई के टीका लग जाएगा जहर का तो वो तो बेहोश हो जाएगा। ये बंदा बोल कैसे रहा है? मेरे लगा रहे हैं धीरे धीरे, उनको मालूम पड़ा कि जहर का ही टीका लगा। स्लो पॉइजन। पॉइजन की दादा ऐसी वो पुरानी डॉक्टर है ना, उसमें दिमाग नहीं लगता, साइंस नहीं लगती। एक्चुअली अरे उसके पास पिंकी पीरनी है ना। हाँ दादा दादा उसके पास पिंकी पीरनी है ना, जादू टोना सुधार देगी, सब ठीक कर देगी। नहीं, वहां पे कुछ गड़बड़ हो रहा है। जो मिलिट्री है ना, मिलिट्री दो पार्ट हो गई है। जो पहले वाला आईएसआई चीफ था ना, जिसको कि वहां का भाजपा के बाद में मतलब आर्मी चीफ बनना था, उसको बनने नहीं दिया ना। वो क्या नाम था उसका, चिकने का? चिकला हमीद। हाँ, शेख हामिद करके ना, जो घर में किसी लौंडिया को लेकर के कुछ गड़बड़ कर रहा था तो बीबी ने गोली मार दी थी, कुछ हुआ था ना अटैक, को क्या नाम था उसका? वो भी गोली मारी थी पिछवाड़े में उसके। शेख हामिद नाम था उसका। फैज ना, तालिबान से मिलने गया था। हाँ फैज हामिद तालिबान से मिलने गया था। हाँ, जो चाय पीने गया था वहां पर, वो गड़बड़ करवा रहा है सारे के सारे। जो पेशावर का जो वो था ना, क्या बोलते हैं, अभी लाहौर में किसके मिलिट्री वाले को किसका चलाया वो कमांडर लाहौर में कोर्प्स कमांडर। हाँ, तो कोर कमांडर हाँ, पेशावर का जो कोर कमांडर था ना, लास्ट में वो वहां से रिटायर हुआ ना वो, इसीलिए पेशावर में ज्यादा दंगे हुए हैं। अरे उसके घर से देखा मैंने, पंखे और लेटरिन की सीट उठा लेके जा रहे हैं। पखाना भी तक नहीं छोड़ा। ये हाल किए भैया, कोई कुर्सी बांध के लेके जा रहा है, कोई पंखा, कोई लेटरिन की सीट। मूर्खों को देखो, कुछ समझ में नहीं आता। हमने इनका नाम रखा हुआ करोड़ कमांडर्स, क्योंकि हर कम से कम करोड़ तो वो जो स्ट्रॉबेरी नहीं देखी थी जिंदगी में कभी, उन्होंने स्ट्रॉबेरी पहली बार खाई। कह रहे सालो यार, रोटी खाने को नहीं, तुम स्ट्रॉबेरीज खा रहे हो। और बेचारे मुरैलों को पता नहीं मोरों का क्या हुआ, वो खा गए होंगे साले मार मूर करके। हाँ, खा जाएंगे इसको, भून के खा देंगे। ये ऐसे जालिम आदमी है, भेड़िए साले जानवर। वो तुमने आपने देखा उसका, अब तो घबराओ सालो। अब आपको घबराना है। आपने अब घबराना है, ठीक है। अब कहेगा इमरान खान, अब आपको घबराना है। प्रदीप 287 में पेज पे पढ़ो तो, 287 पेज, When the racist Aryan Dravid theory, ये पढ़ो, बाकी छोड़ दो ऊपर। 287 ना, 287 में when the racist Aryan Dravidian theory was propagated, there were many takers for it, ये पढ़ो। यहाँ पे बराबर मार रहा है वो, ऊपर वाला छोड़ दो, सारा सारा ऐसे ही है वो। हाँ, when the racist Aryan Dravidian
चोरी। एक मिनट, मैं फिर से दोबारा से जुड़ता हूँ, आप लोगों की आवाज नहीं सुनाई दे रही। अच्छा वो नेटवर्क में गड़बड़ होगा इसीलिए करता है, मेरा भी अभी गड़बड़ कर रहा था, अब ठीक हो गया। हाँ बीवी दादा, बंदा- मुझे ना 4 बजे निकलना होगा क्योंकि मैंने इंटरव्यू लेना किसी का, फिर मैं 4:15 4:30 बजे तक वापस आ जाऊँ। ठीक है ठीक है, अरे अभी हम खत्म करते हैं ना आज इसको, आज हम अब जाकर के हम उस पे जाएंगे। मैं सोच रहा हूँ कि कल इसको खत्म करने के बाद में द सीड ऑफ पार्टीशन रियली व्हेन दे वर सोन, वो पढ़ना है अपने को। औरंगजेब जब मर गया था ना 1707 में, उसके बाद में रियल सीड ऑफ पार्टीशन वाज शोन दैट टाइम ओनली, उसको देखना है। ये पार्टीशन का जो मतलब फंडा है ना, उसको पूरा क्लियर करके अपने को आगे निकलना है, कहीं पर भी जाएंगे तो। बहुत पूरी सोसाइटी का सत्यानाश कर दिया इसने, पता नहीं क्या क्या वो भाई, क्यों वो गड़बड़ हो रहा है। हम वो बात कर रहे थे ना अंग्रेजी और हिंदी में संस्कृत पे, तो मैंने हाँ, लिखा था हाँ। यहाँ पे कि जिस भाषा में सबसे ज्यादा आप स्वर बोल सकते हैं, सबसे ज्यादा जिसके लिखने के वर्ड्स होना, वो संस्कृत था दुनिया में। हालांकि चाइनीज लैंग्वेज भी है, ठीक है, पर चाइनीज पिक्चर वाली लैंग्वेज है, पर जो बोलने वाली लैंग्वेज है ना, उसमें संस्कृत में 54 उसके लेटर्स हैं और 16-17 उसके वाउल्स हैं, स्वर हैं। हाँ। जी और जी जी। और अंग्रेजी में बाजवा सिर्फ साहब, 26 और 5 हैं। बाजवा साहब, जो संस्कृत मोस्ट साइंटिफिक एंड फोनेटिक लैंग्वेज है, पूरी हाँ जी। अप्रोप्रिएट तरीके से। और सीधी सी तो बात है, सीधी सी बात है, जिस लैंग्वेज में सबसे ज्यादा आवाज आप लिख सकते हैं वो सबसे बढ़िया बढ़िया लैंग्वेज होगी। और यही बात आप उर्दू उर्दू और जो फारसी इनकी लैंग्वेज है, वो तो उनके तो 35 लेटर्स भी नहीं है। हिंदी पंजाबी गुजराती मराठी के 35 है लेटर्स, और 11 उनके स्वर हैं, इनके वावल्स हैं। जो 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 हमारी उर्दू और अरबी लैंग्वेज है, इनके तो 35 लेटर भी नहीं है। जी 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 बिल्कुल, तभी तो वो तुतला के बोलते हैं, आधे शब्द तो उनके तोतले। बहुत सारे हमारे इनकी आवाज, हाँ, बहुत सारे तुतला के बोलते हैं, बहुत सारे हाँ। वर्ड्स बोल नहीं सकते, खा जाते हैं। और अरे ऐसे बड़े गले से बहुत सारी वो गले इंग्लिश से भी पता बोलते नहीं हैं तो कैसे तुतला के निकलते हैं। बोलते हैं इसी वजह से। चलो बस मैंने दादा, यही बात बतानी थी। नहीं संस्कृत उसको जो पढ़ के है, अगर को सुनाते हैं, वो बहुत अच्छा एक कोट है ना उसका, ऊपर कहीं पे है ना, मदर ऑफ ऑल दिख करके जो लिखा था वो। हाँ हाँ, मैं अभी करके सुना देता हूँ और उसका वो भी बता दूंगा मैं। ये है 264 पेज पे। 264 पेज पे सेड विल डुरांत, अमेरिकन हिस्टोरियन एंड फिलोसफर, यहाँ पे है। ये कट करके निकाल लो कहीं भी, इनको फाइल बना के सेव कर लो, जो जो इम्पोर्टेंट कोड्स हो। ये क्या हमारे बता? पास तो पूरी बुक ही सेव है भाई। ये बता रहा ना, कोट कर रहा है, विल ड्यूरेंट। पढ़ो। हाँ। हाँ, India was मैं the पढ़ो। motherland of our race, and Sanskrit the mother of Europe. The mother of Europe's languages. She was the mother of our philosophy, mother through the Arabs of much of our mathematics, mother through the Buddha of the ideas embodied in Christianity, mother through the village community of self-government and democracy. Mother India is in many ways the mother of us all. वाह, क्या बात बोली भाई, कौन है ये महान? सल विल डुरांत, अमेरिकन हिस्टोरियन एंड फिलोसफर। अरे यही कुत्ते ने तो लाइन खींची थी, ड्यूरेंट लाइन, दारू पी के वो डूरेंट है, वो डूरेंट है, ये डूरेंट है, DURANT। अच्छा, वो अलग अमेरिकन है है, तब, अमेरिकन ठीक है है। ये। जी जी जी, तब सही है। हम सोचे वो दुष्ट वाला कुत्ता नहीं था। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं। ये क्या बोल रहे हैं, फिर से पढ़ो उसको, सुनो समझो, इसको समझने के लिए कम से कम 10 दिन चाहिए। इंडिया मैं समझ गया। ऑफ आवर रेस, आवर रेस मतलब वो बोल रहा है अमेरिकन है, फिर भी बोल रहा है इंडिया वॉज द मदरलैंड ऑफ आवर रेस जी जी जी, एंड क्योंकि संस्कृत द मदर ऑफ यूरोपियन जी लैंग्वेजेस। जी, फिर आगे क्या बोल रहा है, लैटिन सी तो पूरा वॉज द मदर ड्राइव ऑफ हुई आवर है इसी से। फिलॉसफी। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखो सेमी कॉलन लगा करके सी बोल रहा है, दैट मीन्स ये संस्कृत के बारे में बोल रहा है। सी वॉज द मदर ऑफ आवर फिलॉसफी
comma, फिर semicolon, mother through the Arabs of much of our mathematics, mother through the Buddha of the ideal embodied in Christianity, mother through the village community of self-governance and democracy. क्या बात है? ये कौन है? अमेरिकन विल ऑथर ड्यूरेंट। विल डूरंट। विल डूरन, ओके। अरे और भी तो उनका कोई राइटर था 19th सेंचुरी का, क्या नाम है उसका, जो इंडिया भी आया था, बड़ा मशहूर नाम है उसका। दादा बहुत सारे ऐसे हैं जितने साइंटिस्टों ने ध्यान से पढ़े हैं ना हमारे वो वेदांत और ये सब चीजें, फिलोसफीज जो है वो बहुत मतलब जो है बहुत प्रेज करते हैं उसको, और वो भी मतलब बड़े बड़े तगड़े तगड़े वाले। अरे हेनरी थोरो, वॉल्डन, हेनरी थोरो या वॉल्डन तो हिंदू बन गया था, फिर हार्वर्ड ने उसको निकाल दिया, फिर दोबारा आया क्रिश्चियन बनने मजबूरी में, क्योंकि उस टाइम पे ना फिर वो होता है, वो तो हिंदू बन गया था। इतना फैसिनेटेड था ये उपनिषदों से और वेदों से, वो हार्वर्ड तो पता ना, हार्वर्ड से पंगा लो तो फिर छोड़ते नहीं है वो। दादा ओपनहाइमर से लेके श्रोडिंगर तक जितने बड़े बड़े आप गिन लो, मैं बड़ों बड़ों की बात कर रहा हूँ, साइंटिस्टों की, छोटे मोटे तो गिन भी नहीं रहा। और जहां तक संस्कृत की बात कही थी, जब हम संस्कृत बोलते हैं ना तो आप अपनी जबान को नोटिस करना, जीभ को। जब हम काका गागा पढ़ेंगे तो जीभ की पोजीशन धीरे धीरे पीछे जाएगी। जी जी बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, ये पूरी एक्सरसाइज होती है मुंह की, सिर्फ साउंड ही नहीं है, आपके पूरे मुंह की एक्सरसाइज भी साथ के साथ करा रहा है वो। अरे तुम फ्रेंच को देखो, बड़ा कहती है फ्रेंच बड़ी स्वीट है, पता नहीं, समझ नहीं आती। फूंक मार रहे हैं कि बोल के रहे हैं। हाँ, ऐसे थूक रहे हैं फूक रहे हैं क्या। अच्छा, मैं एक कंपनी में था 2006 में, एक कंपनी ज्वाइन की, नक्शे बनाती थी। वहां पर एक आया दिलीप सरकार, बंगाल से था, वो पीछे बैठा, समझदार, कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड, और वो ट्रेनर को बता रहा है, कहता था वैल्यू, कहती व्हाट, अच्छा मैं तो समझ गया क्या कह रहा है, वैल्यू, वो वाह को वाह बोलते हैं। वो खड़ा हुआ, हाँ, वो आया व्हाइट बोर्ड पे, उसे व्हाइट बोर्ड पे लेके ना कोई लिखा, तो अब मैं तो पीछे हंस रहा। हाँ, तो वो जब वापस मुड़ा ना, वो जो व्हाइट लड़की थी उसका पता क्या कहती यार स्मार्टी पैड। तो लेकिन वो पीछे से कहे वैल्यू वैल्यू, अच्छा वो बोले क्या, बेचारा वो बंगाली बोलता है। तो अब हमारे भी अपने में भी ये प्रॉब्लम है, अगर आप कोई रीजनल लैंग्वेज बोलते हैं, कुछ वर्ड्स आप वाह को बा बोलेंगे। हाँ दादा, रीजनल लैंग्वेजेस सिर्फ एमर्ज करी है संस्कृत पे, पूरा संस्कृत जो वो जो है आपका ग्रामर थोड़ी लिया है उन्होंने। अब ऐसे ही अगर आप अवधि हैं और इधर क्या कहते हैं, ये जो दिल्ली के ईस्ट से और इधर इलाहाबाद के वेस्ट से जो बीच का क्षेत्र है, यहाँ पे जो वर्ड हैं वो साफ सुथरे हैं, जो यहाँ की लैंग्वेज के हैं। मतलब हिंदी यहीं से तो ड्राइव हुई है, क्यों दादा? हाँ भाई बुंदेलखंडी देखो, वो भी अलग हो जाती है, और उधर अगर भोजपुरी देखेंगे इलाहाबाद में ही है ना। हाँ हाँ हाँ, इलाहाबाद में, इलाहाबाद का ही तो है सबसे बड़ा हिंदी साहित्य का वो डिपार्टमेंट। प्रदीप खत्म करो इसको, कितना खत्म हो गया लिखा है यार, सच बात लेवल। हाँ पढ़ो, कहाँ पे, इसी जगह ही। When the racist Aryan Dravidian theory was propagated, there were many takers for among the educated Indians themselves for the ये पढ़ो। कितने नंबर पेज पे दादा? रोज साबुन लगाना पड़ता है, 287, रोज साबुन लगा के धोना पड़ता है इसको। बाप रे, हमारी हिस्ट्री को कितना गंदा करके रखा है यार, बाप रे, बहुत दुख होता है भाई। और ये साले जो हिस्ट्री लिखने वाले हैं, कितना पैसा लिया होगा इन लोगों ने गलत हिस्ट्री लिखने के लिए। 287 पेज। हाँ ये आ गया ना। When that racist Aryan Dravidian theory was propagated, there were many takers for it among the educated Indians themselves.
for they felt it enhanced their status. They were not the rest natives. Their ancestors came from the West. Such was the level of inferiority complex thanks to successful British propaganda. Even Mahatma Gandhi during his South African days pleaded with the British authorities that authorities there that the Indians be treated on par with the British and not like the native South Africans. For Indians too, after all, belonged to the superior race, the Aryans. बस बस बस, मैं जबरदस्ती पढ़वाया। अब ये जितने भी आते ना नीले टिड्डे नवबोध, इसको पढ़ लें दोबारा से। गांधी ने जहर फैलाया यहाँ पर कि हम लोग वेस्ट से आए हैं और जो नेटिव हैं यहाँ पर, जिनको शेड्यूल कास्ट बोलते हैं, द्रविड़ बोलते हैं, वो लोग यहाँ के हैं। ये गांधी ने किया है। नौटंकी ब्राह्मणों के ऊपर मत थोपा करोगे, ब्राह्मणों ने ये कर दिया वो कर दिया। ये तमाशा गांधी ने और नेहरू ने किया है। दादा टाइमलाइन में आप देखोगे तो 800 साल जो है मुस्लिम रूल था, तो क्या मुस्लिम ब्राह्मणों को बोलते थे कि भाई तुम हमारे भी जूते मारो और पब्लिक को भी जो है टॉर्चर करो जाके? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। फिर उसके बाद अंग्रेजों का रूल आया। ये है कि जो हमारे को अंग्रेजों ने पढ़ाया अपनी बुक में, और बाद में इस गधे ने, नेहरू ने, अंबेडकर ने जो लिखा ना किताबों में, उसके चक्कर में उनके जहर घुसा हुआ है ना। असली हिस्ट्री पढ़े तो मालूम पड़ेगा किसने खुरापात की थी, किसने नहीं की थी। दादा मैं टाइमलाइन में बता रहा हूँ, टाइमलाइन में 800 साल आता है मुस्लिम रूल। मुस्लिम रूल में ये तो नहीं है कि वो ब्राह्मणों को छूट देते कि तुम हमारे ऊपर भी अत्याचार करो और बाकी ऑर्डिनरी पब्लिक के ऊपर भी अत्याचार करो। राज हम करेंगे, अत्याचार तुम करो हमारे ऊपर भी, और ये जो यहाँ के लोग हैं इनके ऊपर भी। छुआछूत का रोग लगाया किसने भाई? कास्ट सिस्टम लाया कौन? ब्रिटिश ले आए ना। हाँ अगर भाई आगे चलते हैं, नहीं वो कास्ट को अभी सोसाइटी को डिवाइड करने के लिए अंग्रेज लेकर के आया उसको। दादा ये 800 साल का आपका बताया, फिर 200 साल आगे चलते हैं, अंग्रेजों का टाइम आता है। अब क्या अंग्रेज जो है ब्राह्मणों को बहुत पसंद करते थे। अंग्रेज क्या कहते थे, हमारे ऊपर भी अत्याचार करो, पब्लिक के ऊपर भी अत्याचार करो। वही अंग्रेज लेके आए हैं, वही अंग्रेज लेके आए हैं कास्टिज्म वगैरह। ये उसका क्या नाम है, मैकॉले और उसके थ्रू, अरे क्या नाम है यार प्रदीप, तुम गलत बोलते हो। अंग्रेज ब्राह्मण को पसंद करता था। अरे वो वाला ब्राह्मण जो आप कह रहे हो वो अरे वो पर्टिकुलर ब्राह्मण की आप बात कर रहे हो, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ। बाकी तो सबको तो ना तो फौज में लेते थे, ना मिलिट्री में लेते थे, ना पुलिस में लेते थे। लेते किधर थे? ठाकुर ब्राह्मणों को तो यूपी में और बिहार में बंद था। नहीं कोई, नॉट इवन अ सिंगल ठाकुर ब्राह्मण यूज्ड टू कम टू मिलिट्री एंड पुलिस। और उसके बाद पैसे लंबे थे, 6 फुट 2 इंच थे। गए थे भर्ती होने के लिए, नाम देखा गुलजार सिंह, क्या हो ठाकुर हो, गेट आउट, मतलब नहीं उठता, नहीं लेने का तुम्हारे को। ठीक है दादा, अब ये 200 साल आ गया। अब उसके बाद 70 साल आता है कांग्रेस का। कांग्रेस कौन सा हिंदुओं को पसंद करती है? वो तो इन जनरल सबको ही पसंद नहीं करती। सोमनाथ पब्लिक की मनी से भी बनने नहीं दे रही थी वो, ठीक है। और अगर बन गया, पब्लिक ने अपने पैसे लगा के बना भी दिया, तो इनॉग्रेशन भी नहीं करेगा कोई। मतलब कोई अगर सरकार में आ गया है तो वो पूजा पाठ भी छोड़ दे, तब तो वो सरकार में रहे। ये इनका हाल था। और इसमें बताते कि मैं एक शब्द यूज कर रहा हूँ, जब कोई गरफटा होता है तो वो अपने आप को कम्युनिस्ट नहीं कहता, वो अपने आप को सोशलिस्ट कहता है। तो ये थे नेहरू, समझे कि नहीं समझे आप? ये पूरा अंग्रेजों के प्रोडक्ट होके तैयार होके आए थे, कम्युनिज्म का चोंगा पहन के, और इनके दम नहीं था अपने आप को कम्युनिस्ट बोलने के लिए, इसलिए इन्होंने सोशलिस्ट का वेश धरा जी। तो वही तो बाद में सेकुलर बन गया, वही वोक, वही लेफ्ट, सब चीज वही है, बस फेस अलग अलग है। पेज नंबर 289, द स्कूल एंड कॉलेजेस टेक्स्ट बुक पढ़ो तो इसको मालूम पड़ेगा। तो जो तुम बोल रहे हो अपने आप आ जाएगा वो। 289, द स्कूल एंड कॉलेजेस, आरसी मजूमदार, सीताराम गोयल, धर्मपाल एंड सो ऑन के नीचे है वो। The school and the college textbooks and many of those by the establishment historians are
a shame. They shame, keep shame. they keep peddling the nonsense of the Aryan invasion theory, Aryan Dravidian divide, Indian history as a series of invasions and defeats of the natives, hiding and ignoring the many triumphs and variant resistance of the Indians. From Babur to Aurangzeb, 1526 to 1707, the Mughal rule lasted for less than 2 centuries, but the school texts highlight the Mughal period, ignoring or compressing to just a para the far more grand and longer period of the Vijayanagar Empire of over 300 years, 1336 to 1646, or the Grand Kingdom of Rajaraja Chola, or giving far lesser importance to the Shivajis and Bajirao's reign. Nor is the coverage of India's maritime prowess and the expansion to Southeast Asia, Bali, Indonesia, Cambodia, Angkor Wat, either don't find a mention or are given miserly references. India's ancient prowess in maths and science and industry and agriculture and what India gave to the world is also not highlighted. Shame, shame, shame. दादा इतने घटिया लोग थे ये कि इनको अब सजा देनी चाहिए अगर और सुन रहे जी दादा, ये किताब को डाउनलोड करके अपने बाबा के सामने जैसे रामायण सुनाता है ना, थोड़ा पढ़ के सुनाया कर उनको। अरे वो दादा वैसे पकड़ जाते हैं बहुत गांधी परिवार को। हाँ जी यार, ये तो जो कांग्रेसी ये है ना लिब्रांडू समाज, इनको ऑडियो बुक जो है ना जैसे भजन सुनाए जाते हैं ऐसे सुनाई जानी चाहिए ये। बिल्कुल। अरे इसमें सबसे बड़ी डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए और इसमें सबसे बड़ी वेब बात सीरीज पता क्या बननी है? चाहिए, मूवी बननी चाहिए। देखिए आज हम सोचते हैं ना जो दिल्ली में राज करता है वो सारे हिंदुस्तान इंडिया में राज करता है, भारत में राज करता है। मुगलों के टाइम ऐसा नहीं होता था। जो दिल्ली में राज करता था उसके अंडर बहुत सारे छोटे राजा होते थे, ठीक है, जैसे करनाल का राजा, पानीपत का राजा, सहारनपुर का राजा, ठीक है, और उनके नीचे फिर जो सरपंच होते थे गांव की पंचायत होती थी। पंच तो परमेश्वर का कॉन्सेप्ट हाँ जी, था। हाँ जी। तो ये मुगल तो सिर्फ दिल्ली में रहते थे, ये राजा महाराजा ने थोड़े बहुत पैसे फेंक देते थे, चलो बात खत्म हो गई। तो ये जो कहना कि 800 साल तक राज किया क्योंकि दिल्ली में उनका राज था, ये बिल्कुल झूठ है, अरे आप झूठ है। क्योंकि भारत हमेशा से ही गांव में रहा है, पंचायत हम पे राज करती रही है और पंचायत लोगों ने खुद चुनी है। तो क्या उन्हें जो कभी बहुत ही कम ऐसा हुआ हमारे यहाँ चक्रवर्ती राजा कम थे। हाँ जी, सेल्फ रूल वाला कॉन्सेप्ट वो बता रहा था ना उसमें कि भाई इनका सेल्फ रूल का भी मॉडल था। बिल्कुल ठीक कि ठीक है वो सरपंच जो है वो पंच जो है चुन लिए जाएंगे, वो अपना जो है गाइड करेंगे लोगों को। एक पंच एक रहता था ब्राह्मण से, एक रहता था क्षत्रिय से, एक रहता था वैश्य से, एक रहता था शेड्यूल कास्ट से और एक रहता था एसटी से। उसे आप चाहे आदिवासी समाज कह लीजिए चाहे अछूत समाज कह लीजिए, पर सभी रहते थे 5 जन। अरे अवगढ़ जो स्लेव डेस्टी पढ़ाते हैं ना 1200 से आसपास में कुतुबुद्दीन ऐबक और जो आए थे यहाँ पर नौटंकी कर रहे थे, कोई कहानी नहीं है उसके बारे में। असल में पढ़ोगे तो इनका सिर्फ छोटे से गांव के टाइप के इलाके में इनका रूल था और उसको बोलते हैं कि हाँ अरब क्या बोलते हैं ये मुगल क्या है वो स्लेव डायनेस्टी बलबन खिलजी और भगवान जाने क्या क्या कर रहे थे। अरे गंगा डोबा है वहां से लेकर के और इलाहाबाद तक तुमने राज कर लिया तो क्या पूरे हिंदुस्तान में राज हो गया तुम्हारा? दादा वो खुजली डायनेस्टी है, अलाउद्दीन खुजली। करते हैं साले। विंध्या से साउथ की तरफ जाने की हिम्मत नहीं पड़ती थी इन लोगों की, कटुओं की। राइट, हाँ जी। सही कहा। और उधर असम की तरफ भी नहीं जा सके, बंगाल से आगे ऊपर नहीं जा सके। हाँ, एक क्वेश्चन है मेरा, ये साला बंगाल में इतने कैसे ये बिल्कुल फैल गया, बिल्कुल कीड़े की तरीके? नदी ना बीच में ये खाली रह गया सब। गंगा गंगा गंगा
नदी से इनका बेड़ा चलता था ना, 50-50 100 नावों का किनारे में, जहाँ पे आसपास में जहाँ पे रुकते थे वहां पर सबको काटते जाते थे ये लोग, और जाके अल्टीमेटली वहां पे पहुंच गए कलकत्ता में। वो तो ठीक है दादा, पर ये यूपी में तो बीच, ये यूपी बिहार का क्षेत्र रह गया, सीधा बंगाल में ही, बांग्लादेश में ही कैसे पूरा ये छा गए। वही तो, गंगा से ये लोग गए ना, इनकी हिम्मत तो थी नहीं उधर से कि श्रीलंका होकर के उधर के वापस आए इधर, तो इधर से जाकर के वहां पे लगातार इसी तरफ जाते रहे ना ये लोग, पूरा पूरा पहले बिहार को लपेटा, और बाद में वहां पर जब बांग्लादेश पहुंचे तो दूसरी बात तो ये है, जहां पर भी बुद्ध ज्यादा थे ना, वहां पर इन्होंने ज्यादा सत्यानाश किया है। हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था। तो वो लड़े ही नहीं, म्यांमार जो है, वो जो बर्मा है, वो सारा बुद्धिस्ट था। तो वहां पर तो उनको है, ठीक है, हमारा तो कौन है वो महात्मा बुद्ध आकर के हमारी रक्षा करेगा ना। दादा वो पैस्चराइजेशन एक टेक्निक आपको पता है ना, कि एकदम से आप गर्म कर दो और एकदम से आप ठंडा कर दो तो जो है बैक्टीरिया मर जाते हैं ज्यादातर। सेम चीज है, हिंदुइज्म से शांति की तरफ जाना यानी बुद्धिज्म की तरफ जाना कंपैरेटिवली इजी है, ठीक है, लेकिन उससे फिर दोबारा इस्लाम के बराबर टक्कर दे पाना एक तरीके से पैस्चराइजेशन ही हो जाता है, कि फिर आप एकदम से शांति से रिवर्ट नहीं कर पाते शस्त्र के साथ। कहने का मतलब पीके जी, मतलब कहने का मतलब ये है कि वहां पे क्षत्रिय धर्म बचा ही नहीं था बांग्लादेश के एरिया पे। हाँ, अगर तुमको याद होगा, प्रदीप था, भारत की हिस्ट्री में मैंने बोला था, हमारा देश का सबसे बड़ा दुश्मन था जिसको अशोका द ग्रेट बोलते हैं। That idiot killed thousands of millions of people in Odisha, and afterwards he was converted into Buddhism, और उसने पूरा अफ्रीका अफगानिस्तान तक पूरा कन्वर्ट कर दिया था, सबको बुद्ध बना दिया था। और उसका खामियाजा क्या हुआ देख लो, अफगानिस्तान इज अ मुस्लिम कंट्री। जी दादा, और ये भी नहीं है कि उसने जो है, ऐसा नहीं है बुद्ध बनने के बाद उसने नरसंहार नहीं किया है, उसके बाद भी नरसंहार किया है उसने, लेकिन पढ़ाया क्या जाता है कि नहीं, वो बुद्ध बनने के बाद शांत हो गया था, वो नरसंहार कर रहा था। लेफ्टिस्ट लिबरांडुओं का चाल है। और दूसरी चीज देखिए, आयरनी इसी से सीख सकते हैं कि जो रिलीजन है, धर्म, वो पॉलिटिक्स में नहीं घुसेड़ना चाहिए। तो देखो बुद्ध, अशोक ने घुसेड़ा और सत्यानाश कर दिया। अभी तुम ये बताओ, जहां पर वो जो बोलते हैं ना वुल्गर मुस्लिम जो बोलते हैं, वो इलाका कौन सा है? अफगानिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर में पड़ता है ना, वहां पर भी बुद्धिस्ट रहे होंगे, इसीलिए वहां पे सारे मुसलमान बना दिया उनको मार मार के। जी, सेंट्रल एशिया पूरा बुद्धिस्ट तक का जाके, ये किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो जहां इसका भाई और बहन गए ना, अशोक के, अपने भाई को यहाँ भेजा, बहन को वहां भेजा। अब श्रीलंका में क्या था, श्रीलंका जो है आइलैंड है, किनारे में एक तरफ को है, तो वहां पर ये कोशिश तो की होगी इन लोगों ने, लेकिन वो वहां के सिंगलीज लोग हैं ना, उन लोगों ने अपने कल्चर को बचाने के लिए इनको मारपीट के सत्यानाश कर दिया होगा इस चक्कर में। और फिर वहां ज्यादा फायदा नहीं था, छोटा सा कंट्री को रूल कैसे करेंगे ये लोग। और दादा यही मैंने अभी पैस्चराइजेशन वाला बोला ना, एकदम से शांति की तरफ चले गए, फिर एकदम से इस्लाम को ये लोग जो है फेस ही नहीं कर पाए, कि एकदम ठंडे से गर्म हुआ, इनका काम हो गया। और इसीलिए मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनई जैसा वो सारा मुस्लिम बना दिया इन लोगों ने, क्योंकि सबके सब बुद्ध रहे होंगे वो। हिंदू थे, बुद्ध के पहले हिंदू था ना इंडोनेशिया। हाँ, हिंदू था, बौद्ध बना, बौद्ध बनने के बाद वो मुस्लिम बना इंडोनेशिया। मतलब इंडोनेशिया का तो अपना स्थान विशेष पीसफुल कम्युनिटी को ही देते थे, अपना पिछवाड़े का स्थान विशेष पीसफुल वाली कम्युनिटी लेती थी इनका। हाँ, कंबोडिया वगैरह अभी भी जाओ ना, वहाँ पे अभी भी बड़े पुराने मंदिर हैं, बहुत बड़े कंबोडिया, वियतनाम। संदीप दादा, कहने को वो बुद्धिस्ट है पर पक्के नहीं है। ये तो अभी वापस रिवर्ट हो जाएगा हिंदुइज्म की तरफ, आपका इंडोनेशिया। अच्छा, इंडोनेशिया में एक प्रॉब्लम तो और थी ना, कि राजा जिस धर्म को मानता था, पूरी प्रजा को उसी धर्म को मानना पड़ता था। इंडोनेशिया की जो राजकुमारी है वो तो हिंदू बन गई, इस्लाम छोड़ के। तो बन गई। हाँ, नहीं वो उनकी जो है एक वो है, क्या कहते हैं, अरे क्या कहते हैं उसको, भविष्यवाणी कहते हैं ना, तो उसकी भविष्यवाणी है। जब राजा जो है वहां का कन्वर्ट हुआ था, तो उसके जो कुल पुरोहित है उसने उसको श्राप दिया था
कि ऐसा ऐसा होगा और उस टाइम जो है हिंदुइज्म वापस आ जाएगा। तो वहाँ की पब्लिक ये सारी चीज़ मानती है और इसीलिए चीज़ें वहाँ चेंज हो रही हैं। इसीलिए वहाँ की राष्ट्रीय बुक जो है वो रामायण है, ना कि कोई और बुक। मतलब आप ये सोचो सबसे बड़ा प्लेनेट पे मुस्लिम देश, राष्ट्रीय बुक लेकिन रामायण है। प्रदीप इसको खत्म करो। इट वाज एक्सपेक्टेड 290 पेज पे इट वाज एक्सपेक्टेड दैट नेहरू वुड बी कंसर्न अबाउट द अबव एस्पेक्ट एंड वुड प्रॉम्प्टली टेक करेक्टिव स्टेप्स। ये पढ़ो लास्ट में, खत्म करो इसको। चलो मुझे अब जाना होगा, मैं कोशिश करूंगा थोड़ी देर में। बस सर इसको चुन के जाओ, बस खत्म करते हैं हम लोग इसको, चैप्टर ये खत्म कर देते हैं स्ट्रीम में। तो बस ये लाइन है, 2-4 मिनट और बस। It was expected that Nehru would be concerned about all the above aspects and would promptly take corrective steps post-independence. But alas, the writer of the Glimpses of the World History and Discovery of India was himself a slave to the Western thought and interpretations, topped with the distorting Marxist negationalist lens. Net result, not only the distorted Indian history remained unchanged and colonial, it actually became further worse with Marxist negationalist interpretations and distortions, as the next 3 blunders chapters bring out. बंद करते हैं, बस यहाँ पे बंद कर दो, अब आगे चलते हैं, तो छोड़ दो, बंद करो इसको। ठीक है दादा, हाँ जी, थैंक यू, मिलता थोड़ी देर में। मिलते दादा। ठीक है जी, मिलते हैं। मेरी भी एक कॉल है 5-10 मिनट की, फिर ठीक है स्ट्रीम बंद कर देते हैं ना। स्ट्रीम बंद कर दो दादा, मैं ज्वाइन करता हाँ हूँ ठीक है, 10 मिनट स्ट्रीम में। बंद करते हैं। हाँ मैं क्लोजिंग कर रहा हूँ। हाँ। तो आज ब्लंडर्स ऑफ नेहरू पार्ट 9 में ट्यून इन होने के लिए धन्यवाद। और अगर आप कंटेंट को पसंद करते हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने जैसे जो है सोचने वालों के साथ और अपने दोस्तों के साथ। अगर दोस्तों यारों को करेक्ट हिस्ट्री बतानी है और नेहरू की गलतियां बतानी है और सही रास्ते पे जाना है, अपने हिंदू राष्ट्र को क्या बोलते हैं उसको, हिंदुओं को और सनातन धर्म को अच्छी तरीके से बचाना है, तो इस वीडियो को शेयर करें मेरे भाई। हम लोग 10 सीरीज में या 12 सीरीज में जाएंगे, इसको सबके सामने शेयर करें, आज नहीं तो कल पर। ये मत सोचे कि 3 घंटे का वीडियो है, देखें इसको, बहुत कुछ मिलेगा इसको। अगर अंग्रेजी समझ में नहीं आती तो किसी को बैठा ले जो अंग्रेजी समझा सके आपको। जी, अगर जो है आपको आज की समस्याओं का मूल कहाँ है, उसकी जड़ कहाँ है, हाँ। आजाद भारत में वो देखना है, तो ये वाली सीरीज आपके लिए बहुत जरूरी है। तो इसलिए सबको शेयर करिए, जो आज की समस्याएं हैं उसको जानना चाहते हैं कि उसकी जड़ कहाँ से आ रही है आजाद भारत में, तो वो यहाँ से आ रही है। इसलिए शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो है नोटिफिकेशंस ऑन रखें ताकि आने वाला कंटेंट आपको मिल सके। अगले पार्ट के साथ फिर आपके सामने सम्मुख होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हिंद, धन्यवाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।